and the moderator for this session is Mr. Vipin Pabbi. Mr. Vipin Pabbi is a former resident editor of the Indian Express Chandigarh and currently serves as the Dean for the Department of Journalism and New Media at Shoolini University. Pabbi sir is an alumnus of Chel Metri School. He did post-graduation in English from Punjab University, Chandigarh. He has been journalist since 1979 and has extensively covered the political and social developments in the Indian state of Jammu and Kashmir, Gujarat, northeastern state Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, and Chandigarh. He has been the founder president of the Shimla Press Club and currently the author of the book Shimla Then and Now. Sir, can we have you on the stage, please? Now, I would like to introduce our chief guests. First, Colonel Daljit Singh Chima. Colonel Daljit Singh Chima is a postgraduate in management and engineering and has been associated with management education for past 38 years as regular part-time guest faculty for MBA programs in armed forces, universities including Punjab University and other institutions. He was principal of prestigious Bharatiya Vidya Bhavan, Dayanand College of Communication and Management, Chandigarh, and Director Professional Studies, DAV College, Chandigarh. He was peer member of NAAC UGC for inspection of colleges. He has also worked as technical expert for selection of faculty for engineering and management, subject with Haryana government, and authored study material for Punjab Technical University. Can we have you, sir, on the stage, please? Now, with a huge round of applause, I would like to introduce Shastri Ramachandran. Shastri Ramachandran is a veteran journalist specializing in foreign affairs and geopolitics. In his time as a journalist in India, he has held the position of editor at the Sunday Mail and the senior editor with Times of India and the Tribune. Furthermore, with his experience as senior editor with China Daily and Global Times in Beijing, he has developed as a specialist on Asian foreign policy. Besides being a journalist, Mr. Ramachandran has also established himself as an author by publishing various papers and editing books, such as State of Nepal. Can we please have you, sir, on the stage? With a huge round of applause. जी. Thank you for the introduction and thank you so much, Shastri Ramachandran, very, very senior journalist whom who had worked with the Tribune here also, as well as several other national dailies and also news dailies in China. And from that experience, he has written this book, which is under discussion today. And of course, Dr. Colonel Chima's introduction has already been given, and he's also quite well known here in Shoolini. So I don't have to go beyond that. So without any further wastage of time, I will start asking some questions. And first from you, of course, Shastri Ramachandran. Uh, my curiosity is more as a journalist. We'll get to your book a little later. As a journalist, how was it working in China, writing for Chinese dailies, and how was it different for working in India and Indian dailies? Very interesting question. Not easily answered because it's a very interesting question. Not easily answered because very complex the way one works in the media in India and in China, both places, and they're also very different. I'll try to be as brief as possible in this. Keep the mic, please. Mic. Especially for those who are not acquainted with the goings on in the world of journalism and newspapers. In China, it was initially very intimidating, very challenging for me because we have all grown up in this Anglo-Saxon tradition of journalism or Anglo-American. We have these ideas of freedom and no ceilings or no walls or that you can go anywhere, do anything and you write for your conscience and all this kind of thing.
which is a lot of things you said as you learn that there are interests and there is management prerogative, publishers prerogative, all these things. But then when I go to China, then there is the power of the state. There is a state, it is not just a state, it is also a party state or a communist party. And then the benchmarkers are a party newspaper like People's Daily and another paper like China Daily, which is the official newspaper. And then you have an agency like Xinhua, which is probably the biggest news agency in the world, perhaps far, far bigger in terms of its reach, power, and resources than AP, Reuters, or any of these agencies. It is actually a sub-state, a state within the Chinese state. So it's good I kind of learned these things very quickly and adapted myself. So when I work in China, you have to be patient and believe that everything will come to the patient man, which it did. Because I go to work at 9 o'clock, so all the Chinese will come at 9. Then there is a day editor, there is a night editor, then there is an editorial editor. Each editor will change what the editor before him has done or not done. So I said, but this is not the way I function. When I write an editorial, you might tweak it, but you can't then decide whether to publish it. They said, no, you've written the edit, you forget about it. So I said, I did that as a reporter. You file and you forget. But I don't want to be wasting my time writing an edit. They said, no, don't make too much effort. We will tell you what we want you to write that. We'll take care of the rest. We need your English language, the way you would write it, the art of writing and how you would say things. But it'll be the Chinese agenda. And it is really surprising how they would work. That their English may not. The Chinese have this extraordinary capability, those who don't know English especially, to successfully run English publication. This is really extraordinary. Their editorial meetings are in English. Are in Chinese. So we who are sitting, even an editor who knows English, he will have an interpreter. When I talk to her every other day, I talk to her in English. She's perfectly all right. Then when they have hired me, they will hire another English language expert who would preferably be a white man, a Westerner, a Canadian. They would not have a Filipino guy or somebody else. But it was rare because almost always a white man, because in global times, I was the only non-Chinese Asian and I was the only non-white foreigner out of 28 foreigners who were there from various other countries. But global times was different from China Daily. So China Daily, they would talk only in Chinese. So I don't know what they are discussing. And then they say, no, this is it. They decided. So every day, this is how the paper. And when you write something, they know enough of your language, find out what is wrong with it. This reminds me of many people I've come across from UP, for example, who have a very great understanding of English literature, of Shakespeare or Shelley, but they cannot express it in English. They can express it only in Hindi, but they are masters of English literature, which is when I learned that all those who know English literature are good in it, need not necessarily be good in the English language. So this is a truth which I again reminded myself there. The second thing on a day-to-day functioning, what they will do, after I've edited something, read it, it will come for the third round of verification. What they will do is they will put traps within it, where the words and all, after we had edited it, would be joined again. And you are bound to miss one or two of them. That the editors can make out. See, no, there were 32 mistakes in that. You have corrected only 29. Where the other three are, so I asked her, where are the other three? She said, okay, I will tell you. Then she has to look at her computer because she can see all the 7 or 8 stages through which it has gone. And in their software, it will show who has edited what. So you have the system of not only editorial oversight, but also of surveillance. Both are. But, so this is one experience. Yeah, very interesting. Before Colonel Chima comes with a question, I will start about your book. And would like to know what was the motivation? What was the motivation for writing this book? For the book? Yes. Motivation. Actually, when I wrote, many of them were articles on different themes I had written. And sometimes I used to be quite skeptical
Does it make sense to write about China in Indian newspapers? Why should I write? The people read it. Then, from the most unexpected quarters, I got a lot of responses, like Gautam Adhikari, who was the editor of the Times of India, then DNA. He went back to Washington and he said, I'd worked with Gautam and he was a friend and a colleague. So he said, Shastri, writing from China for an Indian newspaper is a kind of a social service. I later met him, I asked, what did you mean? He said, no, nobody understands China. Everybody will say China is an enemy, but why is it an enemy? And if it is an enemy, all the more reason for you to understand the nature of your enemy. So we should know more about China. So whatever you write, there is so little of it. It will be useful. It's a public service. It's a useful social service. That was second. Second thing, I had a large number of, I used to cover the MEA also, right on that. And I've done a lot of foreign affairs reporting earlier. So I have been followed by a section of the bureaucracy in India, certain policy think tanks who used to invite me, I used to engage with, and also some of them abroad, especially in the Nordic countries and in Germany. So every time I wrote, I used to send it to 10, 12 people. Then eventually the list grew to about 250 to 80 people worldwide. And this I would send by mail. And I got a response from them. And every year I used to tell people that you want me to stop sending you this, please tell me. There were some people who would say, like a press counselor from everything, I have moved on from this, so I don't need this. And they were very frank why they didn't want. So this. And when I came back to India, many people, these same diplomats, journalists, critics, China scholars, they said, why don't you put all your writings into a book? Now, putting all my writings into a book, if you ask a journalist to do it, unless he's quite exceptional, then it becomes a vanity enterprise. I did not want it to be a vanity. If I wanted to write a vanity enterprise, I should write some really nasty, salacious gossip, which I have gathered. Then people would read it. It would sell well for the wrong reason. But here, I said, okay, let me put it together. But I don't want to go through my writings again. So I said, I must find a person who is at least one generation removed from me, be at least 25 to 30 years younger than me, and put it together, at least make a selection, categorize it for a generation that will read it after. I cannot write for you, and I can write for people who are in their 30s at the most, even 20s. And it was very difficult to find such a person. I went through two of them, then finally the third one, and then COVID came. So the motivation was, as I've said in the author's note, I was persuaded and I was told it'll be of value. And I found a person who was motivated and I tried to dissuade her. I said, there's no money in it for you. Why do you want it? She was in Vienna. She'd learned Mandarin. So I gave her many reasons why she should not do it. It's worthless for her. Then she clearly explained why she wants to do it. So that is what finally tilted the scales. Okay, Colonel Chima had been on the other side of China. That is, he was in the army and he was posted close to Chinese border. Plus, he has a lot of knowledge and interest in China. He has reviewed 3 books earlier. Hopefully, he'll also be reviewing your book in some newspaper or the other. So I would like Colonel Chima to ask you a couple of questions. Good afternoon. Hello. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Before I come to the subject proper, I am surrounded by 2 journalists. I see 4 journalists sitting in the audience, Mr. Prabjot Singh ji, Ajay ji, then Jupinder ji, my friend, and Kanchan. So I feel there is some kind of media briefing going to be there after half an hour. So, now my connection with this book or with China is that my first posting was in NIFA, Northeast Frontier Agency. And I have been to those areas which I'm sure would have had some mention in this book also. The second aspect, how can you not be talking about China and not be talking about Galwan and Ladakh? I've had the opportunity of commanding a battalion in 1986 at Ladakh. So I suppose I know something about China, not as much as Mr. Shastri knows, of course. Mr. Shastri, my question is, looking back to see the future is a great idea. However, this is also a fact that the debacle of 1962 or that humiliation is etched very, very deeply in the psyche of every Indian.
I being a Fauji, it has more impression on me. Now, please tell me, is it the right time to have a fresh perspective of whatever has happened and moving on? Is there a need to have a fresh perspective of the entire thing? You see, it is a fact that uh, India needs China and China needs India. I'm talking of trade and other things. And it is a good idea if both these nations become friendly somehow. It is not only in their interest, it is also in the interest of the entire world. So do you think my question is relevant, sir? Thank you, Colonel Chima. I'm acquainted with Colonel. He's a very modest person. He doesn't have anything to be modest about. I've known him from my Tribune days. He was a reviewer for us, a very valued reviewer of books when I handled the books page. And he is exceptionally well informed on policy matters. And he's also being modest when he says that army people don't know much. Of course, they know a lot. They know a lot more about geopolitics than many people I find who are teaching policy or public affairs or foreign international relations. But what some of them lack who are from the army is that they lack the jargon of diplomacy, if I may say so. Their insights are exceptional. Like, for instance, General J.J. Singh, who was governor of the Northeast. I think there might have been better people. He was exceptional because I am told he has traveled thousands of miles on that border there, which perhaps no other army person at that level has done. So that itself makes the person, he's traveled 7,000 kilometers or 10 or something like that. So one, whether he has expressed it or not, one cannot belittle the knowledge and the insights of which he is a repository. So I would similarly credit Colonel Chima with a Thank you knowledge so and much. insight, and I have seen it in his writing. Now, as far as China and India is concerned, this may or may not be the time for the two countries to decide we'll bury the hatchet over the border and other issues and become friends. But there is no time when you can say we do not require diverse perspectives. As a journalist, my job is to report and to place before you that here is a perspective, here is perspective B, here is perspective C. And every journalist wants to do something different, something new, you know. So we were told when we were reporters, don't think you're the first person to write this. Every story under the sun has been written. You get the right angle and you put it in the introduction, then your story will sell. The story is not new. The angle in which you cast light on it is what makes it new. So, to put it differently, I have attempted to redefine how stories are told from China as a journalist. That is why the title Beyond Binaries. We have this binary, we are good, China is evil. We are a democracy, China is a dictatorship. Oh, we are an open market economy, they are a state controlled economy. You know, we don't eat beef, they eat beef. So you can add to this a binary, a burden of historical grievances, contemporary grievances, prejudices, ethnic biases. You can go on adding these kind of things, which is what I find happen. Now, if you apply, there is only one other power which can come between India and China, that is the United States. And one of the persons whose works I have read on China, India, and the US, and who has said that the 21st century will be of a continuous tussle between India, US, and China, trying to figure out which two will tango against the third. The person who has written a book on this, and it's a very profound but very readable book, is by Mr. Kishore Mehbubani. Yes, I'm sure most people have read this book because it's not categorized as China literature or anything like that. So when you look at that, I also felt one must look at everything that happens, that the US is a player in India-China relationship. And when you say the US is not a single organic entity. You have interests in the US which want India and China to be reconciled. You also have a powerful military establishment in the United States, a military establishment which does not cost the state very much. In fact, the Indian state spends more on its defense than the US does because the US profiteering from the arms industry takes care of the US military expenditure, its defense expenditure. So there is an interest first and foremost
in keeping India and China at loggerheads. Second, similarly, there is an interest in keeping India and Pakistan away from an actual war, but ever on the brink of war, because this is in the interest of the international armaments industry. You know, so we have to recognize that. So that is why you will find when you ask whether we can be friends, everybody will say, oh, we want India in the nuclear suppliers group, but only China is stopping you. But who set up the nuclear suppliers? It was the US which set up the nuclear suppliers group. And its sole purpose was to keep India from not getting enriched uranium after 1974. And it is like a game, you know, this is game theory that we all play. If I know one of us will disagree on something, I will happily support it if I know Colonel Chima or Professor Pabbi will disagree with it. But if I think both of them are going to agree, then I will oppose it. So that is how this game is played in all clubs. And so it's not a question. It doesn't matter whether India and China become friends or not. You don't have to become friends. The US is not a friend of any country in the world, but it does business with every country in the world. So I would like this binary of friend and enemy to be diluted. You know? So now all relations are transactional. This is the age of transactional relationship. Everything has to be accounted for in terms of a tangible outcome. So towards that, what conditions can be created for the two states to have peaceful coexistence and not spend so much on their hostility to each other? I have provided a perspective for You that. see, Mr. Shastri, what I feel is, look at this way. You see, the center of gravity of power has shifted from Europe to Asia. Asia. It has shifted there. And China is continuing to do nibbling our land, whatever. I mean, people may accept or not accept, but I am aware of the fact, and I'm sure that even in Galwan, some pieces of our land has been taken over by China. Now, if we really want to progress as a nation, and our, as you know, the trade deficit and the kind of trade we have the maximum trade with China. Now, economic strength will come from trade, and military power will come from producing your own weapon system or purchasing it from America, France, and all over the world. Now, in that kind of scenario, I feel it is very essential that you bury the hatchet. I am not saying that become friends. We can never be friends with China. We will never be friends with China because that thing is there at the back of our mind. Though I also believe that China did not give us a backstab, as Pandit Nehru believed. It was a stab from the front, and we knew that it is coming. I can prove it with there's no time to do that. But I am aware of this fact that it was coming, and it was as a matter of fact, if I may be permitted, there was a letter written by Sardar Patel on 7th of October, 7th of November 1950, and 7th of October 1950, China had marched into Tibet. 1 month, exact 1 month after that, Sardar Patel wrote a letter to Pandit Nehru that this is what is going to happen with us, with India. Pandit Nehru, of course, had his own perception. He was too good a man to believe that people can, you know, backstab him or something. And he wanted India to grow without getting involved in any conflicts and things like at that time when India was. Yeah. So my point is, looking at the entire thing, we cannot, you know that there are 3 to 4 times our strength of armed forces as well as weapon systems. And technology wise, maybe there are 2 decades ahead of us. We cannot match them. This fact is a reality. The earlier we accepted, we should continue developing our infrastructure on the borders, which we are doing. Good. Modi government is doing a great job. All that should keep happening as a deterrent. But this is also fact that China will never stop from nibbling your land. China will never stop from doing what it is best at doing. So in that kind of environment, should a diplomatic soft diplomacy, as they call it, soft power of diplomacy, should it not become very urgent at this moment to do this kind of thing? I think it is necessary to step up soft diplomacy. I wholly agree with you. And go a little further than soft diplomacy in terms of people-to-people relationship. When I first went to Beijing, there were probably a few hundred Indian students in Beijing and employees there working for Microsoft and for
Infosys and Sundaram Fastener, some of these companies. And this was started happening even long before that, the early 2000s. So I had written at that time an article in the Times of India editorial page saying that learning a language is a skill. To learn English, it does not make you a victim or subject of colonialism or the English language. It's a skill like you learn typewriting or shorthand. Similarly, people should also learn Mandarin if they want to go to China. So you can, but now, before this Galwan and before COVID, in 2016, when I had my last stint of continuous employment in China and I left, there were more than 30,000 Indian students there, and the majority of them from Punjab. And I was really astonished that I was getting a lot of feedback from what I will call the lesser levels of engagement, not from the MEA Mandarins, but from people who are going from Chandigarh and Ludhiana and Jalandhar. And what are they getting? And Gurgaon. The person in Gurgaon, he's got a factory for nuts and bolts and nails. He shut down his factory, goes to China, brings it here. He is paying his permanent workers 50% of their wages and selling the hardware he's brought from there. He says, we are still in profit. My factory is closed. My workers are not complaining. I have no. All these contractors in Punjab, they go to Guangzhou, which is closer for many of them than going to Beijing. And they get all these sanitary pipes and sanitary ware. Then I met somebody from Jalandhar who has for years been getting these shoe uppers and soles from there. And he says India gets almost 60%. Then I met a contractor who gets electrical goods from China. It's not small. His biggest customer is Bajaj. He says, they brand it. We deliver the produce. All the t-shirts which you buy in Kidarpur market for 100 rupees, they come from Guangzhou. They come to Kunming. The Kidarpur market worker is taken in batches to Kunming. They unpack it from the whole cargo of a train into packages of 30 and bring it to Bengal. And then, so I asked Pranab Mukherjee once if this is possible, why is cooperation not possible? He said, no. If you write that, you will put an end to that also. So you see, this is so on the one hand, the state is aware of these processes. On the other hand, there is a confusion whether you should be benign and let it go on or whether we should crack. Second thing is when you speak about Galwan, General Naravane, who was Chief of Army Staff at that time, he said that on June 20th, he has given an unforgettable birthday gift to Chinese President Xi Jinping. And he will never forget that because that was the time the Indian army struck back against the intrusion and provocation by the Chinese People's Liberation Army. So it was only natural for me to invite, as a newsman who thinks always who would make news, to invite General Naravane to release my book in Delhi. So when he came to release my book in Delhi, he agreed. So I said, fine. And I didn't put his name in the invitation because I said, then all these TV channels, they said, what kind of a journalist are you? You want to keep out the TV channel? I said, they will come and occupy the whole space with their cameras and lights. It will take away the focus from the discussion. And I want the general to speak, not to be seen on TV. So he said two things. He said, first thing, if I go to China, of course I can go to China, but they will invite me with a one-way ticket and I will be whatever, shot dead there. So I can't reply to him in public, but I wanted to tell General Naravane. In fact, I would say publicly now that Xi Jinping or the Chinese ambassador who is to be appointed after 15 months should take up the challenge and invite General Naravane to China. And we should, there are times when we should call their bluff. You know, this should be soft diplomacy, where, like a debating club. That is what I was talking about. Some such dramatic gestures to transform the atmosphere of how we think about China and how we think about our responses. It might not have a lasting effect, but it will make us think differently. Coming back to your hello, coming back to your book, I've been going through that, and you are mentioning about the infrastructure that has been that has come up there, and how fashion houses and everyone had been there. No, India and China got their independence close to each other. And at least they opened up around that time.
So what do you think? Is India paying a price for democracy that infrastructure-wise and economy-wise, we are far behind China? What is the reason behind? What are the reasons? Is it just the form of government or dictatorship there and democracy here? See, this question of democracy is a very difficult thing. There can be no single definition of democracy. That is my answer. And when this Arab Spring was there, newspapers asked me here to write, and some EU diplomat once called me to speak on why the Arab Spring has not reached China. So when I remember Edgar Snow's book, which many people would have read, I would recommend it. It's one of the simplest books to read on China, Red Star over China, by Edgar Snow, who was Yes. the one who mediated a conversation, dialogue, made it possible between Nixon and Mao Zedong. And Edgar Snow says that you should measure every regime by whether it has benefited a larger proportion of the population than the regime before. So any test of democracy of China can only be whether it has given more democratic rights to its people, not by whether it has the formal institutions of democracy that we are acquainted with. We are acquaint democracy with certain processes. They acquaint democracy, like most of East Asia, with certain outcomes. Like you don't have extreme poverty anywhere in East Asia. They don't have democracy in the sense we know at all. None of the ASEAN countries. They are doing better than us. And there are many Indians who dream of becoming like Singapore. So it's for me very contradictory to say that we celebrate the dictatorship in Singapore, and Indian intellectuals love to go and work in Singapore on the condition you will write nothing about Singapore and Malaysia, but about the rest of the world. And so it was a similar situation for me in Beijing. You write whatever you want, as long as you don't write, what do you say, unwelcome, provocative piece. I did write on mainstream Chinese issue. That is my badge of pride in China, that I figured out there is a language of writing. As a journalist, there is no, not to write is not a solution. I have to find a way of writing. If I can reach one person more than the converted, I have achieved my success. So that is how I see the democracy. Mr. Shastri, what I would like to know is, you see, like China is the master of reverse engineering, it is also the master of deception. China tells the world what it actually is not. Let me say why I am saying that. You see, China has not fought a war since past 6 decades. It is a fact of life. The social fabric in China is under stress. They are going through economic downfall. That miracle, Chinese miracle, which we used to talk about in history, it is of the past. Uh, this is also the fact that there is a lot of corruption, even in armed forces. You see, when you talk about corruption in armed forces, it is something to be worried about. In Chinese armed forces, there is a lot of corruption also. Now, and this is also a fact that America will have to tell us if there is a fight, if there is a some kind of war between two of us, how long to continue and when to stop. You see, this is what America's job is. Now, I believe the Ukraine-Russian war could have been averted. I believe that Ukraine was lured into or forced into going for the war. Otherwise, it was not imminent that Ukraine will join NATO. It could have been avoided, but America wanted the war. Now, America does not want us to have the kind of relationship which India can use to its advantage, whether it is trade or there are many other things which are related with the military conflict. Now, in that kind of circumstances, what should be India's best chance? What should India be doing? India's first and best and most important thing to do is ensure that there is no extreme poverty in India, not by manipulation of statistics, but by showing this reality to people who matter. I sat at a meeting with three Nobel economists who've been greatly interested in the development of developing countries, especially India and China. Nobody would question their credentials. Amartya Sen, Joseph Stiglitz, and Martha Nussbaum. They used to come to India almost every year when Manmohan Singh was a prime minister because they could talk to him. They also used to visit China. They promoted kind of a lot of dialogue between scholars in India and China on extreme poverty, what are these policies, and discussed it in three places: in India, in Delhi, in Beijing, and wherever the poverty quarters, and in New York and New School, because they said we should sustain dialogue at
some level. So economic cooperation is one level. Second thing, the world's healthcare power is not necessarily a rich or powerful country. The world's healthcare power, according to the UN Secretary General, is Cuba. The maximum number of doctors sent to Africa to fight Ebola was not by US, not by Europe, not by UK, not by any of the former colonial countries, but it was by Cuba. The maximum number of Cuba sent more doctors than the entire Western world put together. And they have built many of the hospitals in China. And there is a view from people who followed this, that India is a power pharmaceutical production, not a power in terms of capacity alone, no, in terms of price. You 10, 15 years ago, you paid 1 rupee for statin in India. It used to cost $1 in Beijing. So if the two countries cooperate, it will be a threat to whom? To not only the armed lobby, also to big pharma. And why do we think China will hurt us more than this big pharma lobby of the US? You look at the big pharma lobby, how it is destroying Indian pharmaceutical industry, twisting our arms every year, threatening sanctions under 301. And so one lesson we have to learn, we don't have to support China. We have to create conditions for business with China. Be very tough and make it clear to China that these are the terms of business. These are not terms of endearment. These are terms of business. And these are the brass tacks. This is where we will draw the line. Second thing is, we have to have serious scholars and journalists working, citing historical precedent to show that if tomorrow India were to rise as a power, the Western world will treat us in the same way that it is treating China today. Let us make no mistake about that. The US wants to put down China's rise. It is using us. And it will use that same China to put down our rise. Let us not forget, India's finest hour in international diplomacy was in 1971. All the five, all the four of the five UN powers with veto power, US, France, UK, they were all against India. And the US sent its 76th fleet into the other thing. And India triumphed with the support of Russia. China, and Kissinger sought to, he has himself written in his book, he sought to prod China to invade India in this. They did not, for whatever reason. It might not have been friendly reason, for their own self-interest. They did not do it. Now, you are right, the economic boom in China is more or less over. After all, it's been there from 1979, 80. So it's almost 40 years, which is a long time, which is as much as, let us say, the American century after the post-World War. So 40, 50 years is about the peak for any country. India's time is yet to come. But what can we learn from China? My personal thing is China does not want war. Why? Because if it goes to war, all the acceptability it has gained, all the benefits of globalization. China has been the biggest beneficiary of globalization, of the collapse of trade barrier. And you look at what the West is doing. The moment the developing countries succeed with globalization, they want to restore barriers. This is exactly what they will do to us also. So we should find a way of being with the developing countries. We have to win the minds of a real G20, not by bringing Biden to a G20 summit where all the attention is on Biden, by G20 leaders becoming the focus of their attention by what they do and in economic terms. This is what I would, for a small example, one of the things I attempted in China as a journalist was, because the underlying principle of a lot of my work was that there is very little that I as a journalist can do about the bilateral differences. But I can do a lot about looking at what are the shared interests of these two countries. So one of the things I wrote during the G7 summit, for which both China and India were invited to Canada, was that time we had got the Bhopal gas leak. After 26 years, the second largest case of industrial genocide in the world, those people got a few years of imprisonment after 26 years. So I gave the example of what British Petroleum did. They spilled oil in the Gulf of Mexico. The US did not spoil their relations with it. They said, guys, pay up $20 billion. Without a whimper, the British paid up $20 billion. Why couldn't India get Union Carbide to pay up like that? So I said, why should India and China go to the high table of G7 to serve the interests of those countries? We should go to the high table
where India and China will fight for the Bhopal gas leak victims together. So this is a piece which Global Times carried as well as the Tribune. So this was for me an experiment in journalism also. Yeah. So I would say no friendship. Start doing business where we have meeting ground. Let us look at what our meeting ground, because force is not a solution in the long. That's all. But given the present circumstances, the setup in both the countries and the current tensions, how do you view future relations in say another couple of years or 5 years? No immediate improvement. Trade will continue. Actually, trade is booming. The best economic conditions were during Manmohan Singh's time. They had set a target of $100 billion of bilateral trade, but it has been achieved only long years after he left office and when the whole cooperation collapsed. Now, every year it's 120, $130 billion is the trade. Trade is booming. So let it go on. And we return to what both PM and External Affairs Minister were saying. Let not differences become disputes. After saying that for 8 years, or let us say 6 years from 2014 to 20, if you say on the border, no talk, no, you have to talk. How can you not talk? And in a sense, it is lack of transparency. Who says China and India is not talking? Of course, they are talking. There is backtrack channel 1, there is back channel 2. Conversations are always going. Why is it not public? Because to prepare the public mood. No nation can afford to give up its territory. So anytime a border issue is resolved, given the prevalent thinking, it cannot be resolved. The Indian public will not. Any government which does that will lose the election. They I will lose think popular support. I you agree with you. made the point. You see, you're right. We are in direct contact with China. I know somebody, Indian Foreign Service officer, who's on China desk, and I get some information that what all is going on. The things are on. The diplomacy, soft diplomacy can never be stopped. Now, I was just thinking that before China attacked India on 20th October 1962, before that, they accused us of that forward posture. We started building up our posts, which I am aware of those places where the posts were built up now. Now, something similar is happening now. They have already moved to next to the borders where they're all infrastructure, it is already there. And they have developed the villages and everything is as if they are, they're very close to the border. We also wanting to do that. Now, this is going to create certain irritants. Those irritants are obvious in their display of whatever they want to do at various places which they are. But I strongly believe that we should also be thankful to China for certain things. Every downside has an upside also. And the upside is the worst did the best to India. We were woken up. We have started working and using whatever strategy we are doing now to use it as a deterrent against China, which has its own, it wants to become the greatest and the best in the world. There is no doubt about it. It wants that. But our best strategy at the moment is to what you said, continue with dialogue, continue with your trade, become stronger. The stronger you become, because today's nations, there are two things, economic strength and military power. If you are able to military power, as I said, it will take years for India to come at par with them. It will never happen. That gap can never be. You see, basic research and applied research, which they have developed over the years, we cannot think of doing that kind of technological. So I agree with you. As long as President Xi Jinping is there, the present political and external and military policies are there. There cannot be any political initiatives towards. And given the fact that Galwan has happened during the time of this government in India, unless the political leadership of both the countries change, and not just a change of face, but a change of party color, and in China, a change of ideological or liberal color come to the fore, there is unlikely to be friendly cooperation. But you can have peaceful coexistence. One last point I want to say, which I would like people like Colonel Chima, those who are working on border, to think about it. See, I used to write a lot for Chinese CCTV news and all this. And sometimes you have this thing that you call a stalking horse, that you write about two other countries, which is a story that can be interpreted to mean as between you and your country also. So there were talks between Putin and Abe.
because many of you people may not know that officially World War II between Japan and Soviet Union is not yet over, because we have the northern territory, or the Kuril Island, which is still a disputed territory. So they have to sign an agreement as to whom the territory belongs to. Neither country can afford to give up the territory to the other because it will raise a hue and cry. Even in Russia, Putin will lose face as a Russian nationalist if he gives away property, state land of the state. So one of the things these two guys discussed, I think it's a splendid idea out of the box to calm all anxieties. Without saying what is this nonsense about borders, they said, let us talk about joint border development. Now, this might sound very strange in the East, but if you look at Denmark and Sweden, if you look at Sweden and Finland, the case of Jutland, now people stay in Malmo in Sweden. They come to Denmark to work. You land at Copenhagen. 15 minutes you take the train at the airport, you will go to Malmo. 15 minutes the other side, you go to Copenhagen. They don't feel they are different countries. Why can't we reach that? And to this, there was an initiative towards this end, although not in explicit terms. This was called the Bangladesh, China, India, Myanmar Forum. This is what was called sub-regionalism. And that people in the borders of all countries, that these people who are on the border of China, on the border of Bengal, of India, and of Myanmar, they have more in common with each other than with the people who are sitting in this room or in Chandigarh or in Chennai or in Delhi. And they will do everything to protect their habitat, their culture, and their peace and their security, and they want to prosper. So there are a lot of Chinese scholars, and even today, Patricia Oberoi, who's written a comment for my book, who's a very distinguished Chinese scholar, she had also said, I am very upset with this Belt and Road Initiative. I don't care about these issues of sovereignty with India, and because this is just an extension of their mutual hostility. But I am really terribly upset. Why have they destroyed BCIM, where the people of the four countries were at least meeting? So there are a lot of spaces which you don't see when you are at the center, at the acme of power in Delhi. Pranab Mukherjee, when I had gone to Sikkim, Pranab Mukherjee had made a statement in Delhi, which I would have heard it differently had I been in Delhi. He said, we want peace on the periphery to ensure progress and development at the center. So what are they saying? That these people at the border, they have to be sacrificed for peace in whatever sense, which is very similar to what Nehru said in 62. My heart goes out to the people of North East, even before it was. So Right. we have to break with that mentality, whatever the political. That is my suggestion. Thank you. Thank you very much, Shastri Ramachandran. Thank you, Colonel Chima. What an illuminating talk. And China has always been mystery for most people. You have been very fortunate that you have been there and you have such studied so much of India-China relations. It was certainly a very interesting talk. And I think and since I have read the book, so I'll also recommend that everyone should go through that book. It's full of, anecdotes and information about China. So thank you very much for coming here. Thank you, Anjin. Thank you, Vipin. Thank you, Kalan Chima. Thank you, everyone, for especially our honorable chief guest. Now, I would like to call upon Dr. Poonima Bali and Mrs. Sunaina Sharma kindly join the stage and facilitate our guests. Thank you, everybody. Thank you, sir. Moving forward, we have our next session. Reverence renewed, Lord Ram, the icon of modern India.
This session will focus on discussing the contemporary significance of Lord Ram in Indian society. In this session, we will explore how Lord Ram's teachings, values, and cultural symbolism continue to resonate with modern Indians, Hello. influencing various aspects of lives, including politics, religion, and social norms. The session will delve into the enduring reverence of Lord Ram and his portrayal in literature, art, and popular culture, highlighting his role as a unifying figure in the diverse tapestry of Indian identity. This session will be chaired by Dr. Purnima Bali. She is an associate professor and head of the Chitrakoot School of Liberal Arts at Shoolini University. With a PhD in English literature from Himachal Pradesh University, Shimla, India, awarded in 2017, Associate Professor Bali brings a wealth of academic expertise to her role. Associate Professor Bali has over 12 years of teaching experience. Her academic contribution comprises numerous international research papers, reviews, book chapters, and edited books published by renowned journals and publishing houses. Her dedication to scholarly endeavors has earned her recognition, including the prestigious Young Faculty Award 2016, Bright Educator Award 2017, and Bright Educator Award 2018, acknowledging her significant contribution to the field of education and research. Please welcome Dr. Purnima Bali with a huge round of applause. Good afternoon, everyone. I'll talk about the session a little bit later because most of our speakers and the guests who are on their way because there was a session going on in Pine Court. So I don't want them to miss this session because it's going to be our second last session. So going to be very interesting also. So I'm going to introduce you afterwards. What do you say? So please come on the stage. Please put your hands together to Mr. Nilesh Kulkarni, sir. Now he's going to scold me first because I'm calling him sir. So we have a deal. So yes. So whenever I'm calling him sir, he's not responding to me at all. No, that's not correct. Yes. The moment she calls me, sir, I call her Dr. Bal. So that is kind of a relationship we are having for the last so many years. And sir, it's an honor always to have you in our panel. And that's why you have been called for the second last session, which is the speaker spotlight session. So it's honor. So can we have a kind of a general kind of discussion before we get to the hardcore discussion? Is that okay with everyone? So we are going to make it very interactive, and I think you are going to like the session a lot, right? So, sir, I'm going to use the hand mic now. So, sir, I think I should actually show the book first because it's going to be my favorite book last year and this year, right? And this book has been translated into different languages now. और इसका हिंदी का जो टाइटल है ये तो बहुत ही खूबसूरत सर ने लिखा है. That is राम के पथ पर रामायण के संग संग. So, Nilesh, anything about the title you want to talk about when we get deeper into the discussion of the literary deliberations? I can probably only comment on the English, Hindi, and Marathi titles because it has also been translated into Tamil, Telugu, and Malayalam, in which case I can't even pronounce the names. To talk of commenting of them is out of the question. Yes, it is. See, the book is about a journey which I have undertaken, in which I and my co-author have traveled from Ayodhya to Sri Lanka, following the exact path which Prabhu Ramchandra ji took when in his Vanvas. So it is, we have actually physically followed in its footsteps. We went to all the places that he went to. So it is actually in the footsteps of Ram. So the title is meant to tell you what the book is all about. So it is about us following in his footsteps in literal terms, and then also at a philosophical level, wanting to follow in his footsteps in terms of the values that he propagated or he stood for. That is what I guess the deeper discussion will be later on. Sir, when we are talking about Ram, I will not call because I'm a literature professor here and most of the time our students are calling them Ramayana,
and or some kind of focus on the double A here. But let's call him Ram. That is fine with us, right, Nilesh? I have a point, which is that, see, there, when you are using a Sanskrit term, it is either a short Rama or it's Ram. So that A is not supposed to be Rama. It's supposed to be Ram. That more complete jo hota hai, that is only because of the second A. So what we are making, the mistake we make is that we tend to presume it's actually three A's and say Rama, which is not quite right. So it's Ramayan, it's Ram, it's Krishna, it's Lakshman. I mean, of all the names that are normally mutilated, I think I find Lakshmana to be the most heinously done. Then what we are going to do with Sita? Anyways, we will have a discussion later on that. Nilesh, when we are talking about this particular book, right? When we are talking about Ram, so there are a lot of journeys he has gone through in his life. But you chose a specific period. That is the trail from Ayodhya to Sri Lanka. Why this particular kind of trail you chosen out of his life? Yes, the reason was that this is probably what defines him more than anything else. So all the characteristics that he stands for and that we revere in him actually came to the forefront in this journey more than all the others. In the first journey, in which as a child, he was taken to the Yagyashala in order to protect the Yagya from the Rakshasa, Right. Rakshas. At that point of time, now I wonder how to do Rakshas instead of Rakshasas. Rakshason ke se bachane ke liye. I can probably put it like that. That time he was too young. And it was only a kind of initiation. But what he actually stood for came to the forefront only when he undertook this journey in the Vanvas. So that is why I think the Vanvas journey was most fascinating. And that is why we have taken that. Nilesh, when we are talking about writer, and I'm just a kind of new in this field because I will start writing something. So when we write something, we also go through a journey. And that journey is kind of very transformative sometimes for all of us. And of course, you are talking about Ram. That means a journey which is kind of iconic in India, right? So of course, you will be going through a certain particular kind of a journey within. So would you like to talk about something? Certainly. I will tell you an anecdote because again, the book is not hardcore history. It's anecdotal. There are a lot of stories in it. So a prime story which actually changed me was that in the very first meeting that we had about the book, it was with Mahanta Premdas. And Mahanta Premdas was the Mahant of the Hanuman temple, the Hanuman Gadi temple. So all of those who have been to Ayodhya know that the oldest Hanuman temple is in a place called Hanuman Gadi. It is said that when Prabhu Sri Ramchandra ji was body tyag ke, he was going into Vaikuntha Lok. At that point of time, he invited everybody from Ayodhya to join him. So even birds, animals, everyone came and joined him and went to Vaikuntha Lok or to their respective loks with him. When everybody had gone, there was only Hanumanji standing on the border, on the edge of the Sarayu. So Prabhu Ramchandra ji ne unko bulaya. You don't mind my being bilingual on this one, no? Because there are some things which actually sound much better in your own language. So Prabhu Ramchandra ji ne unko bulaya और उनको पूछा कि ये सारे लोग मुझ में विलीन होकर अपने अपने लोकों में चले गए, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम क्यों नहीं गए हो? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोला कि मैं भक्त हूं और आप आराध्य हैं. अगर भक्त भी आराध्य हो जाएगा तो पूजा किसकी करेगा? I want to retain my identity. Therefore he was sent. रामचंद्र जी ने बोला कि आप हनुमान गढ़ी में जो सबसे ऊंची जगह है अयोध्या की, stay there and look after my people. So that is the oldest temple there. There's another anecdote about it which I'll tell you later. But when we spoke to the Mahant over there and we told him about the idea of the book, as we were leaving, he said कि मुझे नहीं पता कि आप किताब खत्म कर पाएंगे कि नहीं, आपकी किताब बिकेगी, चलेगी, लोग पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि जब आप ये प्रवास कर लौटेंगे तो आप बदल गए होंगे. Which is actually a fact. Which is that in the whole journey, the transformation was here. It's not here. I can't lay down in words what actually happened inside my heart. The kind of changes that I underwent, the kind of faith that I developed, the kind of things that I came to know about how we actually look at Ram and what Ram should actually be looked at. So I have a very coherent thought process on it now, which I could only do because I have undertaken this journey. Actually, when we are actually planning a kind of a session, we always have a discussion with the moderator and the speaker. Before that, we are having what kind of questions you are going to ask, how we are going to pick up the session, what kind of things.
Believe us, this is the first time in the university right now we are meeting up face to face. We have no idea, but there is a coincidence. Sir, जो आपने अभी एक उदाहरण बताया, One second. This book came out 3 years back, and since then I have spoken to at innumerable lit fests about the book and about other books. And I've been into public speaking, theater, all these things all my life. But today is the first time my feet, I'm trying to push them into the ground so that they don't shake. I've never had a session in which I have not spoken to the moderator before the session actually began. So what happened that he called me up one day and said कि पूर्णिमा ये तो बताओ moderator कौन है? मैंने कहा right now sir you are talking to your moderator. I said oh my god. So it's going to be fun. What I was referring to right here is that when Nilesh was talking about, I'm correcting myself again and again, when you were talking about the incident, when I was going through the whole book, I also came to the same paragraph which he mentioned. So, ये coincidence है कि sir ने जो mention किया, मैंने भी वही मेरा favorite है sir. So, if you don't mind, I can just read it for us. Just Hanuman when he says to Ram, and they says that the others have become part of you, Lord, he said, and so will I if I enter the Sarayu. If I become you, my Lord, how will I then chant your name? How will I worship you? What use is salvation if it means not being able to chant your name? Let me buy, my Lord. Let me stay until your name is taken on this earth. Bless me with hearing your name wherever is uttered. This book is actually so deep and touching, and it is just a transformative experience we all are going to have. So big recommendation from my side too. Nilesh, something, when we write something, so there are certain challenges we have, right? And you are talking about the journey of Ram from Ayodhya to Sri Lanka, right? So what was your difficult part of going through or writing through the process? This is actually a book which operates at 2 levels. There is a travelogue in which I'm actually traveling on that path. And there are the stories of the Ramayana. So as I move from destination to destination, the Ramayana also moves forward. So in each case, they are not stories which you would find in a conventional Ramayana which you have read. There are जो स्थल महात्म्य बोलते हैं उसको, stories which are rooted in the local place. So we have taken stories which are of local origin, known only to the local people most of the times, and put them together in this narrative. So the challenge was shifting the writing style from the travelogue, which is in a present continuous tense, into the story, which is in the past tense. So putting them together so that the narrative doesn't seem broken and it continues to be coherent and continues to engage. This was the biggest challenge, which is why I think about 4 drafts had to be written before it was finally sent off to the publisher. And just because of that narrative, any reader is glued to this particular text because you can't leave and stop reading because then you will be like, oh, where I was. That Sthal is particularly gone. We have no idea where to go from here now. Right. One more challenge, if I may, which is that when you are writing on something like this, which is widely read, widely understood, widely known to people, you have to be very sure of what you are saying. You can't just presume and just put in a story because it's somebody told it to you. See, the beauty of the Ramayana is that there are some 332 written versions of the Ramayana. And if you calculate put in the oral tradition versions or the dance or the puppet or the theater versions, there are more than 3,000 of them. So, I mean, everybody has a different Ramayana. So which one do you take? How do you research it so that it is actually authentic? And how do you do it in a way that no sensibilities are actually affected by what you are writing down? So this is a balancing act. But what we have done for that is that people's sensibilities are actually their prerogative. We have tried to be as authentic as possible. And in the entire exercise, though I have read 7 Ramayans and about 200 commentaries on it of different forms, yet what we stuck to was the Valmiki Ramayana. So wherever there were different versions, either we took the Valmiki Ramayana into consideration or we took the local story and mentioned it in the book in various places that this is not in any Ramayana, this is a local story that we're putting in. So that was another challenge. It's a balancing act was a challenge. Actually, this is the quality of a writer. When we are writing, we have to see that what kind of readers we are going to have in future. We don't want to be controversial when we are talking about Ram. Right? A lot of other things are also related to that. We will get back to that also. Right. So your book is really well acclaimed and very well received by the readers. No controversy till now. I hope so. Not at all. Controversies, if any, have been on the comments that I have offered in NitFest while talking about the book. On the book per se, there have been no controversies. But I do tend to say a lot of controversial things when we are talking about the book.
And you ask me the right questions, I'll say them here also and increase the TRPs of the program. Yeah, I know that. I have been in touch with you for long now, right? So when we are talking about Ramayana, so 300 Ramayana is one thing we are very kind of, because they are literature students here and the scholars here, and this book is banned in Delhi University, another part of India also, because of is that how Ram has been portrayed and projected in different part of the world. I guess we should respect how a icon is represented wherever that is. Absolutely, because see, the Ramayana, the basic story remains the same all over the world. It is the local variations that actually bring flavor to it. Because Hinduism as a religion, as all of us know, has never been expansionist. It has been assimilated. We've always tried to assimilate all local traditions into your tradition, which is why Buddha, for instance, with the greatest reverence and respect, is considered to be an avatar of Vishnu. The idea was to assimilate, say we are all the same, we are all one. Therefore, when the Ramayana traveled across from Ayodhya or even in the north down to South India or to all the foreign locales at which it is, there was an attempt at localizing the Ramayana. So therefore, in order to make people connected to it, to connect it to the basic story, local flavor was added to it. And therefore, when you talk of the Ramayana, you find that each incident that has actually happened in 4 different places. For instance, Jatayuvad. Jatayuvad, as per all authentic sources, happened at a place called Taked, which is right next to Nasik. It stands to reason because if Sita was abducted from Nasik and Jatayu immediately intercepted Ravan, then it was done somewhere close to Nasik. But there are people who believe that it was actually Tamil Nadu. There are still other people who actually believe that it's somewhere in Kerala. So there are different versions that go around. And how this happens is that there is a statue of an eagle in Kerala, which is supposed to be the largest statue of a bird anywhere in the world. So people say that Jatayu ka vad wahan hua tha, isliye wahan pe wo statue bana hai. But if you actually go to the website of the artist who has made it, he says, I created this statue in the 60s because I wanted to create a statue of a large bird. But that's how myth takes you over. I mean, Tamil Nadu, for instance, there is a temple on the sarovar of which, at the end of which, edge of which there is an eagle. People say Jatayu vad yahan par hua tha. Lekin that is actually where Prabhu Ramchandra told Sita ji about Jatayu. And that is why that was made. And that is there in the inscriptions. So, but this is all assimilation. And this assimilation takes place because we want everybody to feel Ram is actually their own. Because of that, the assimilation takes place. And therefore, since it only reinforces the faith, I think it demands respect. So, Nilesh, you have already talked about the assimilation. So now let's talk about the culture also, because Ram is considered as the cultural icon, right? He is considered as the mythological icon we have in the mythologies, right? So when we are talking about culture and we are talking about Ram, so how do we actually resonate it with the different cultural backgrounds? Right now, you just ended your whole kind of thing in the last sentence by saying that that means we are making all the cultural barriers and trying to be one. But when we are living in this country, and I don't want to be very controversial when I'm making this statement, but yes, we have to break these kind of barriers. Then how do the readers or the critics, they resonate with this particular concept? See, the localization is to ensure that the core message stays the same. Nowhere has the core message of the Ramayana been diluted. Whether it is a Jain Ramayana, whether it is a Sanskrit Ramayana, whether it is any other version of the Kamba's Ramayana or Eknath's Ramayana, none of them has the basic message been diluted. It is only the periphery that has been tampered with. So therefore, culturally, the assimilation is made easy by the peripheral diversions that are created. But that ensures that the core message gets across everywhere. So I think unification is a big thing that takes place because of this. That was the question that was asked. Yes, absolutely. So there are a lot of qualities which Ram was having, right? So may I ask you which the one quality do you like the most in Ram? It's a very difficult question, I know. No, not at all. Can we all say Jai Shri Ram once? Jai Shri Ram? Okay. A very decent audience which has said it with the right amount of reverence. Normally it's Jai Shri Ram. It's uttered like as if it was a battle cry. Whereas it is not a battle cry. It was battle cry only in Sri Lanka. Nowhere else was it a battle cry. Jai Shri Ram is supposed to be said like this. Jai Shri Ram. With the proper amount of reverence, with the proper amount of devotion, with the proper amount of empathy getting into it. Because har ek cheez ki
अपनी एक मर्यादा होती है. Maryada is a limit set for approved societal behavior. That concept of Maryada can keep changing, but every place, every concept, everything has a Maryada. And Prabhu Ramchandra is Maryada Purushottam. He knew as to which Maryada to follow at what point of time. There is a controversy about why he sent Sita ji across into the jungle when she was expecting the twins. There's a controversy about why the Agni Pariksha was done. But that is a place where he preferred to execute the Maryada of him as a Raja over the Maryada of him as a Pati or as a husband or a lover. So he had the right choice. He knew where his responsibilities lay and what Maryada to follow at what point of time. So I think that is the basic quality that appeals to me completely. And if you want to hear this in contemporary terms, in what we do or do not do, I think the whole Ramayana is a story of keeping your word. Now, this is something which I bemoan this, I shout and scream about it, but this is something which we have almost completely lost in today's world. Keeping your word is no longer a matter of honor. We lie for small reasons. We make commitments and break them. We keep breaking out of what we have said. And this is something which needs to be imbibed. If we can imbibe this from the Ramayana, that when you give a word, there is honor associated with it, and it's an honorable thing to do, to make sure that you do what you have said. He kept his father's word. He agreed with that. When he went into the jungle, Sita ji was kidnapped. He could have gone to any of the Raja Maharajas and asked them for help. Anybody, he was the prince of Ayodhya. Any king would have sent the army with him, but he did not do that because the promise given was, the word given was that he would not enter a city. Therefore, he took the help of the Vanars, who are actually said to be Vana-nar. Vana-nar combined together makes the word Vanar, which means they were the tribal people for whom the symbol was the monkey. So Vanar unka totem tha. That is why they were called Vanars. So he took the help of the Vanars, but he did not go into a city in order to seek the help of a king of any kind who would have easily helped him. No, he has kept his word all throughout and given the keeping of the word central importance. And that, I think, is if we learn and take that into ourselves, I think that is going to be a complete shift in the way we respond to and talk to people and interact with them. You know, this is a kind of a problem when we are talking to Nilesh, because I have so many questions in my mind, but when he is answering and talking about something, my all questions are gone into somewhere, I don't know. Because a question tha jo mere mind mein shuru se tha, because most of my faculty has asked me not to go into the feminism because I am a core feminist, ki Jai Shri Ram aur Ram Mandir ke chakkar mein kahin Sita ji kahin kho to nahi gayi. But you have already answered this, so I'm not going to get into that perspective. Oh, say, go ahead, sir. You know what? I'm going to share a secret which even Purnima doesn't know about, which is that when you are going into a kind of discussion or thing where you don't know what is going to be asked, you come prepared with 10 stories. Regardless of what the guy asks, you speak out those 10 stories and keep telling them. That is precisely what I have been doing right now. तुम कुछ भी पूछो, मेरे पास 10 आंसर है, मैं वो सारे 10 में से एक चूज करके देने वाला हूँ. So the question about Sita. Let me tell you that the feminists would say that Sita was, if you look at the Ramayana on the face of it, Sita would seem to be a very submissive, docile kind of individual who just did what her husband said and suffered innumerably for that. But in a Valmiki Ramayana, Sita is a very powerful figure. When I will give you some examples of this, which is that when Ram was condemned to go to Vanvas, he agreed to take Lakshman with him. And Sita said, I want to go with you. So he told Sita ji कि नहीं जंगल में बहुत सारे हिंस्र पशु है, वहां राक्षस है, वहां हर तरह की दुख और दुविधाएं हैं, तो तुम मेरे साथ नहीं चलो. She tried explaining in every particular way to Ram कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए. तो जब प्रभु रामचंद्र जी नहीं माने, तो what सीता जी said exactly, इसका श्लोक है वाल्मीकि में. She said कि अगर मेरे पिता को पता होता कि मेरा विवाह वो एक नपुंसक के साथ कर रहे हैं, तो शायद मेरा विवाह आपके साथ वो कभी नहीं करते. तो प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा नपुंसक मतलब? He said, अगर आपको अपनी बाजुओं में विश्वास नहीं है कि आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, फिर तो आप नपुंसक ही हुए ना. अब कौन फेमिनिस्ट आज की तारीख में अपने पति को सबके सामने नपुंसक बोल सकती है, फिगरेटिवली? तो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. नॉट ओनली दैट, जब श्रीलंका में किसे उनको लाने के बाद
अग्नि परीक्षा की बात होती है, तो प्रभु रामचंद्र इज वेरी न्यूट्रल कि नहीं ये तो करना ही है, बिकॉज दिस इज डिमांडेड बाय द पीपल. सो शी सेज कि आपको महान महानायक कहा जाता है, आपको महापुरुष कहा जाता है. अगर महापुरुष ऐसा है तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक स्त्री हूं, मैं पुरुष नहीं. शी सेज दैट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर आर्मी. So look at the strength of the character. So there is no way that the Ramayana is anti-feminist or it puts the woman down. The women of Ramayana are very strong individuals, and you have to really go into depth and not take only the superficial view in order to be able to appreciate that. So can we anticipate that your next book be in the footsteps of Sita? Honestly, Why not, honestly, right? honestly, yes. Well, if there are two things, you know, there are some things you do for TRPs and there are some things you do for yourself. So for the TRPs, yes, of course, why not? And for myself, no, I am not sticking to mythology. My personal, I am now 68, so I am not quite fond of being bracketed into anything. So I don't want to be known after I'm gone as a writer of mythology. I want to experiment with different genres. So the book that is coming out in August is hardcore history. The book that is coming out in February is a book about All India Radio, which is an organizational story. So I'm writing different genres. I don't quite think I'll come back to mythology so soon. My goodness, we are going to miss a lot of things. And Dr. Ekta, please make a note. Next, a history book. Right. Still being followed. Right. So I just wanted to bring this up because Absolutely, yesterday absolutely. also there was some reference to this idea when there was a discussion The regarding two names are feminists. taken so closely together that I cannot visualize just saying Jai Shri Ram. It's actually Jai Siya Ram. Because when Yes. you say Jai Siya Ram, it actually tones down the aggressive rhetoric. Isn't it? Right. It makes it much milder. It makes it much more compassionate. It makes it much more humane. Maybe that is why it is not politically expedient to use that. Right. And if And I'm, Jai Shri Ram is quite expedient because it's aggression, and aggression gets you votes. and if I'm not all that wrong also, because there is one part in mythology in Ramayana itself where I think Lord Ram has have mentioned to Sita and assured to Sita that whenever my name will be taken, before my name, your name will be taken. I think there is some reference to it. I'm not remembering It is in in which part of. it is in Tulsidas. It is in Yes, Tulsidas. yes, Not in yes, Valmiki. It is there yes. in Tulsidas. Right, right. Yes. That's all I wanted to say. Thank you. Your question, your comment. Urmila. Yes. What is the contribution of Radha? I just want to know what charisma she has made or something like that. We always say Radhe, Radhe, everything. Jai Siya Ram, there is a problem. Where the Sita sacrifice is there. Urmila is totally ignored. No author has written a book on Urmila. I'm yet to find a book on Urmila. Why she sacrificed? Why she was not compelled to go along with Lakshman? I'll explain that. See, there are two things. Number one, it is not correct that there is no book. There's a book called Sita's Sister, Kavita Kane. You can go for that. It is the entire thing from Urmila's perspective. There is a book on that. And this trend has only started now of taking various characters from the Ramayana and interpreting the Ramayana from their point of view. It is a very valid way of looking at it because everything stays contemporary only when it is re-examined. If you continue to look at a very fossilized view of history, then that history fades out and becomes only academic. It stays a part of your life only if you re-examine it. So people are re-examining it, and Urmila's point of view has also been taken into consideration. One. Two, why is Urmila ignored in the original Ramayana? Because even in a Mahakavya like Mahabharata, you cannot focus on all the characters at all the time. After all, when you are writing a book, there is a central core message which you want to get across. So anything that is peripheral to the message does get ignored in the book. I think it's a probably purely literary thing that he could not have focused equally on all of them. And her sacrifice. The story in the Valmiki Ramayana is, and even in Tulsidas, I think, is that pehli raat ko, jab Lakshman ji, when they were to cross over at Shringverpur,
when they crossed the river and went across. That is where they shed their royal robes and did that jata, उन्होंने बांधी सिर के ऊपर और अपने वल्कल वेश धारण किया. There, Lakshman ji was guarding Ram and Sita at night. Nidra Devi came and whispered in his ear, "Why did you sleep for some time? Ram is very safe here." So he said, "I will shoot you if you dare to say that I should, deviate from my duty." तो निद्रा देवी ने उनकी माफी मांगी और उनसे पूछा कि आप मुझसे क्या मांगते हैं. उन्होंने कहा 14 साल मैं वनवास में हूं, मैं चाहता हूं कि मैं 14 साल तक न सोऊं और मेरे हिस्से की निद्रा आप मेरी पत्नी को दे दीजिए जो मेरे विरह के कारण वहां दुख पा रही होगी. तो one of the versions is that she actually slept through 14 years and came back only when these people came back to Ayodhya. That's the mythological version. And again, the word mythology. Very often people object to the word mythology because they say, आप इतिहास को mythology कह रहे हैं, झूठ है. तो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण है, लेकिन महाभारत और रामायण इन्हें हम इतिहास ही कहते हैं. इतिहास, as it happened. Does that mean that every single word of what has happened has actually happened? No. There is poetic license. So there is a core of the truth on which a lot of poetic license has been taken and layered onto it. Devdutt Patnaik did a lot of disservice to, he did a lot of fairly number of good things. But initially he wrote a book called Myths is equal to Mithya. So he said that mythology is actually Mithya. Mithya is jhoot, Sanskrit word for jhoot. Mythology Mithya nahi hai. Mythology is actually such है जिसे को सिर्फ पेश करने के तरीके में it has been layered in various ways. An example, if you may, which is that when we are describing, when we see in Valmiki in about 12 or 13 shloks, the journey of the Vanar Sena from Kishkindha to Rameshwaram, then he says, 10 lakh वानर सामने, 4 lakh वानर पीछे, 5 lakh वानर फला के साथ पीछे, इतने लक्ष भालू. हमने एक्चुअली वो सारे श्लोक देखे और उनका टोटल किया. तो जो टोटल मैथमेटिकली आता है, दैट इज अबाउट 5 crores. तब हमने किष्किंधा और रामेश्वरम का अंतर गिना. And then we calculated if one Vanar was only to stand in one place, how much space would he take? And it turned out that if they were marching even in double file, the first person would be in Rameshwaram when the last was leaving Kishkinda. So this is not going to work out. How can there be a war in which the one part of the army is fighting and the second is leaving base? So what is this then? This is poetic license. So mythology में बहुत सारा poetic license लिया जाता है. So this is truth, which is layered to make it appreciable, to make it more linear, to make it more understandable. Therefore, the word mythology, I think, should not be objected to. And that is the reason why, again, जैसे यहाँ exaggerate किया, वैसे उर्मिला का role को थोड़ा downplay कर दिया, because it was not suiting the linearity of the narrative to get into it. Getting, you see, like Meera is not projected in that fashion like Radha has done. Rukmini is forgotten. And I really wonder what Radha has done, except, you see, Meera has done lady bhakti or something like that. But everywhere Radhe Radhe has become more than Krishna Krishna. This is not something on which I have directly studied very deeply, but I have a point. I have a point of view. I have a point of view on this, which is that there is a book on, I forget the name of the book, but it is on the last days of Krishna after he has been shot. Everyone who comes to visit him and everyone who comes to talk to him at that point, whether it is Rukmani, whether it is Draupadi, whether it is anyone, everybody has connected to Krishna because of an agenda. There was something they had wanted from him. Even if it was anything. Radha was the only person who came who had no agenda except to be with him. That is the only case of an absolutely selfless love. He left Gokul, never went back. All through his story, he never connected with her, and yet her bhakti remained constant. So therefore, I think Radha deserves to be, we deserve that it should be called Radhe Radhe or Radhe Krishna instead of Meera Krishna or instead of Rukmini Krishna. Though in Maharashtra, in the Vitthal temple, we always say Vithoba Rukmai. We always take Rukmini's name along with Vitthal, who is Krishna. So Meera is not recognized in that fashion. Not saying that. I know Meera is a historical character. She has actually existed. Sometimes the one who's been carried on for the longest time in all the Geet Govinda and all, you don't find a reference to Meera. You find a reference to Radha. So because the story has been carried forward, that is what it means. So selfless love is not something which happens very often. And it's a very prime example of absolutely selfless love. So bias, therefore. And then again, it is cultural. You are saying this because you are sitting in North India. If you were sitting in Tamil Nadu or Kerala or anywhere else, you wouldn't say Radhe Radhe. You know,
So it's cultural also. It is the reason because Barsana is so close by to Delhi. We go there. That is why probably also we say that more often. Thank you, Nilesh, because that's why we are having these sessions and we are getting so many informations. I will call back to you, Kalsa, definitely. I told you that we are not any kind of dearth of questions, Nilesh, when we started this session. So, of course, when we are talking about all these characters and how they have been in their lives. So, Nilesh, yes, reverence is very important and we have to be renewed it with time. That is what we can do. And one important thing as literary scholars, we should do all the time that keep reading, because most of the time what we are doing that I have written a book, then I am just not doing about the other things and I have no idea about that, right? And sometimes I'm very firm, I have read it somewhere and I'm going to believe that, but it doesn't work in that way, You right, must Nilesh? all keep reading for yourself, keep reading for a better society, and keep reading so that authors can get new cars and holidays. And most importantly, start attending literature festivals as much as you can, seriously, because it has changed our lives. I can just assure you that. And thank you so much, Ashu ma'am, for every year sir, putting so much hard work for putting all the great authors, Purnima, right? before ending, there is an anecdote which if you this We is are the not last, ending all right your now, thoughts- don't worry. We have so something many what you questions. have, yes, Everyone yes. is, Nilesh, everyone is, just giving me a sign. So yeah, definitely. Ekta, Dr. Ekta, after this, because he has to share an anecdote. This is an anecdote about, it is not only see, I told you about the journey of discovery as to how it changed me. So I plan to make that, I think this is something I love to communicate to everybody as to how I changed. I'll tell you the story of how I went to Chitrakoot. See, when they entered, after Chitrakoot, the Ram, Lakshman and Sita ji entered the Dandakaranya forest. Before entering the Dandakaranya forest, there was a temple to one of his ancestors at which they wanted to bow. So they bowed there, took his आशीर्वाद. His ancestor was called Ambarish. तो एक अम्बरीश आश्रम था, वह आशीर्वाद लेकर they stepped into the Dandakaranya. Now I went looking for that Ambarish ashram. Now that when I asked for the place as Ambarish ashram, nobody told me. They called it Gupta Ganga there. Now when I went there, it was about 3:34 when I reached the place. So I asked a shopkeeper. He said, वो पहाड़ के ऊपर वहां पर है. लेकिन अगर आपको वहां जाना है, तो you need to take a local guide because you will get lost in the jungle and there are only narrow paths going up and there are animals there. So he signaled to somebody, one guy came across एक ऐसे फटी धोती फटी बनियान पहना हुआ. वो बोला कि ये वहां लकड़ी लेने जाता है. So he knows all the paths, he will take you. So that guy agreed to go with us. Sigriya ऐसा कुछ नाम था उसका. So he went in, got a kulahadi and got a thick staff and came out. He put the kulahadi, gave me that staff and said, चलिए. तो हम चलते गए. पहले हम खेतों में से निकले, थोड़ा सा जंगल में से निकले. एक नदी थी. नदी में करीब करीब इतने इतने पानी में चल के हम लोग ने नदी पार की. And like good, decent, city-bred individuals, हमें सबसे बड़ा डर ये था कि मोबाइल में पानी चला जाएगा. So we went across the river. And then there was a narrow road leading up to the top of the mountain, about 3 feet high, and it is going up at about 45 degrees perpendicular. So we keep climbing up. After we went up halfway, it suddenly struck me that we were carrying an axe. तो मैंने उसको पूछा कि भैया ये कुल्हाड़ी क्यों लेके चल रहे हो? कोई जंगली जानवर है क्या? नहीं, जानवर तो कोई नहीं है. Then we went a little further up. मैंने बोला कुल्हाड़ी क्यों लेके चल रहे हो? बोला कभी-कभी चीता आ जाता है. So can you imagine, it's about 5:36, it's getting dark and this is a place जहां कभी-कभी चीता आ जाता है. And then as we reach the ashram, there is a small pond. He says, चीता यहाँ पानी पीता है. अंधेरे के बाद यहाँ आएगा पानी पीने के लिए. बोला कुछ नहीं होगा, अपन निकल जाएंगे. कितना डर हमको लगा होगा उस टाइम. So we go up to the temple and I shout out, कोई है, कोई है, कोई है. After 15 minutes, one Mahatma ji comes out and he folds his hands and says कि मैं गैया की सेवा कर रहा था, इसलिए मैं टाइम से आ नहीं सका. साफ सफाई ये सब मुझे ही करना पड़ता है ना, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ. तो मैंने उस मंदिर के बारे में उनसे बात की और निकलते निकलते रहा नहीं गया. तो मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले जंगल के बीच में रहते हैं, यहाँ जानवर भी आते हैं, आपको डर नहीं लगता? He just smiled, he patted my shoulder and he said, आप मुझे बताइए मैं यहाँ किसका काम कर रहा हूँ? I didn't know. I said, उनका. तो बोले मेरे सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है कि उनकी है? मेरा काम मैं करता हूं, उनका काम वो करते हैं. जब वो चाहेंगे तो ले जाएंगे, जब तक वो रखेंगे रखे रहेंगे. This was such a life transforming change. Even at night, if I get up due to any stress, any reason, any
anything on my mind, I just say, Lord, I surrender it to you. जो आपका काम है आप कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मैं वो करता हूँ. What a transformation. And this all because I actually undertook this journey of writing this book. Nilesh, you are giving me so many quotes of the day. So now, yes, before Ekta, I have to give mic to Kaul sir here. Can you please pass on the mic to Professor Kaul? So now we have the management faculty asking the literature question. That is the beauty of the literature festival. Put your hands together. Professor Kaul, careful. I am a management graduate myself, so Yes. घर का बंदा हूँ, Yes, easy question. आराम से पूछेगा. So there is no question. In fact, I was so deeply impressed the way you were explaining the traits and the virtues and the qualities of Bhagwan Shri Ram, and it really fills my heart, with the way you explained it, and I connected, the books which I have read on Ramayana, and I've read at least 6-7 books. I was telling Purnima ma'am this morning. So there are two lines, about Shri Ram, which जिसको कहते हैं ना गागर में सागर भर देना. So it actually encompasses, covers all the great qualities. When we say that he's an embodiment of virtues, वो दो लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ कि दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम. If you have to explain kindness to somebody, दया अगर लिखने बैठूं होते हैं अनुवादित राम. रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम. Because you use these words, मर्यादित, and you talked about the virtues. Even after when Ravana was dead, right? It was on the feet side that he stood and bowed down because he was a great scholar, but he had bad habits, vices, for which he was punished. So this was the great Rama and his character. Thank you, sir. That again, just in addition to your this thing, is not supported by either Valmiki or Tulsidas. It is there in the later versions. It is something that has evolved. Just like the Ramayana itself, Valmiki Ramayana itself is actually written over almost 500 or 600,000 years. It is not written by one person called Valmiki. It is a tradition of people called Valmiki in a tradition which went on adding to it. Uttarkand particularly is probably 1100 BC. And even that Uttarkand has been written by different people. And the original Yuddhakand or the Sundarkand, all those Kands also, they have also been added to by different people from time to time. Their linguistic proof is there that Valmiki's Sanskrit and the Sanskrit of people who have added to it afterwards differs. So these versions keep changing. So one of the versions has this story that you have told, but it is not there in most other places. Thank you, So sir. I guess thank you so much, Kaul sir. And all these kind of literary deliberations are in different pieces. There are a lot of things we have to go through when we are getting into the actual Ram and Ramayana, right? So now I will definitely very quickly go to Dr. Ekta here because she is a history professor. She has something to ask about the historical aspect. And Nilesa, let me tell you, this is the, I think the first session which we are having so many questions. Yes. So basically, Let me say thank you, Dr. Bali. Oh my God. Yes, Nilesh. Okay. so as you are talking about mythology and itihas, you also would use this word. So where and how do you draw the line between myths or mythology and history? History demands concrete proof acceptable in today's world. So it's not as if that is not history. It is not accepted as history by us or by people like you who actually demand concrete proof of everything that has actually been done. But I have my issues with history, which is that what we actually call concrete proof is often something which has been written, something which has been carved. All this has been done by the ruling powers. So you are aware of the fact that history is always written by the victor and not by the loser. Therefore, Hitler, whatever your opinion on him, is always a loser. He's always the villain. And the British forces are always the heroic forces. And that's how it works all over the world since times immemorial. Therefore, what we call proof is also deeply flawed because it only represents one's perspective, does not say anything about all the other perspectives. Yet, we tend to rely on written word, we tend to rely on stone tablets, we tend to rely on Shilalik, we tend to rely on all these factual proofs. All that is history. Anything that goes before that is mythology because it is only hearsay added to a real story. Yeah, sure. Sunani ma'am. A quick question.
Very quick question, Nilesh bhai. So here I'm also sharing with you that as a little child, my grandfather, who was a professor in Delhi University, instead of nursery rhymes, he used to recite Faiz Ahmad Faiz and, Allama Iqbal. And I remember that as a little child, the first thing that I heard from his mouth in a very melodious way was Raghukul Reet Sada Chali Aayi, Pran Jai Par Vachan Na Jai. So this was something that I realized even more concretely in my growing up years, being a daughter of an army officer, that again, motherland ke liye pran jai par vachan na jai. Here I'm asking a rather personal question, that in this journey, this book that Dr. Bali is showing us is the second edition of your book. जहाँ आजकल authors की पहली किताब ही नहीं बिकती, वहाँ True. मेरे भाई की second edition book is out, so a huge round Yes. of applause for that. But do tell us a little bit about how you and your better half Sarita, when you were traveling and in this journey, how it is important for us and the new generation to understand that the partnership of two people in matrimony, how does that work? And how do two people respect each other for the qualities that they have and make something like this happen? The Ramayan and the footsteps of Rama. What horrible timing. I mean, last time I came with my wife, everywhere I've been going with her, you've been present, and you never thought of a question like this. You had to ask it on the specific day on which she's not with me. Ma'am is not here today. Come on, yeah, this is not done. Okay, Dia, just take a video of this answer. We'll send it to Delhi. Okay, okay. See, after a while, so am I, but that's all right. That's expected of me. Okay, so how does the partnership work? It's always a partnership of equals that works. By definition, a partnership is a partnership in which two people are equal. If they are unequal, then it doesn't work at all, isn't it? So this is a partnership of equals. This is something that is going to tickle your feminist bone, which is that I strongly believe that men should not be insecure because they have a strong woman as a part of their life. Because having a strong woman as a part of your life actually is such a terrific feeling, because you can lean on her for support, you can lean on her for views, you can exchange views, you can formulate opinions, you can seek advice. So the ecstasy of living with a strong woman is something that is unparalleled, unbeatable. It is for just self-defeating reasons that we tend to think of our women as inferior to us. So in this particular case, I am living with a woman who brings to the marriage a totally new set of skills, a totally new set of emotions. And it complements me, it adds to me, and I'm able to function better because of it. So there are some things I do better, there are some things she does better. So between us, there are a whole lot of things we do better than we could have done alone. That's how it works. So I guys, it was worth recording also. Dia, you did it. It was very important because it's resent to the ma'am very quickly. Now, yes, Professor Chetri, we have another question from Professor Chetri here. Can somebody pass on the mic to Professor Chetri here? I have a question. I don't know, I was, because I'm busy multitasking, I was in and out of the session. I don't know if somebody has asked this question already, but when I was growing up, the story of Ram, the story of Ramayana was a very simple thing. It was not dissected, it was taken at its face value, and बहुत सरल चीज होती थी जिसको सब एक्सेप्ट कर लेते थे और बोलते थे हाँ ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है. आज की सोसाइटी में are we thinking too much about mythology? Are we taking mythology so seriously? And are we interpreting or using mythology wrongly? Because I believe that mythology was, one purpose of mythology is to create life lessons, or teach values to generations, etc. So are we politicizing mythology too much? And I'm not talking about the real politics, even otherwise, from a feminist angle, from moral value. People are, when we said Ram was Purushottam, Maryada Purushottam, but now people just for the sake of it, or just to get some eyeballs, will start arguing and say, oh, he did that and he did that, and not understanding that it was mythology and it was written for a purpose. Human beings wrote it and they were flawed, and they created a character which in their mind was perfect.
What do you have to say about The character was not created in one day. The character was created over thousands of years. So each society kept adding its own societal norms to Ram. Therefore, the character that you see today is not frozen in time. It's a character which has evolved over time. For instance, a small thing like Shambhu Kuvad, where he shot a Harijan because he was chanting the Vedas. It is not there in the original Ramayana. It is added in the Uttarkand afterwards, in about 1100 CE, because that is the time this thing about caste discrimination was very strong in society. So the Brahmins wanted to justify, I'm making a very controversial statement, but the Brahmins wanted to justify that राम ने अगर वानरों का मदद ली, वननरों की मदद ली, तो भाई वेदों को बचाने के लिए उसने एक शूद्र को भी मारा. So like that, layers keep getting added to it. So it is not one character frozen in time, it's a character evolved over time. And then brings me back to the second question, that all this questioning is to me not wrong, because when you question, you engage with the original text. Now that is any time better than ignoring it, forgetting it, not knowing about it. When you engage with the text, there is a debate. And when there is a debate, just as some people, even for getting eyeballs, present an alternate point of view, there are still other people who think whether this is valid. Therefore, that engagement in society increases. And unless you engage with mythology or with anything at all, it becomes irrelevant. So I think the engagement is valid. It should happen. And it is actually taking the main objective of that story forward. It's making more people think about it. There's nothing wrong with it. my only grouse is, Nilesh, that people are probably not going to the stage of engaging with the text. They're only engaging with short bits of it. And yeah, I'm talking from an academician point of view because I want my students to. That's a general or a generic kind of a complaint that I have, that people have forgotten how to read. They can't read a page also, leave alone a book. No, they can read WhatsApp messages. Yeah, they can. They So very often in Litfest, even otherwise in personal discussions, I'm given a story from the Ramayana कि ये तो हुआ था. तुमको कैसे मालूम? मैंने तो 6 रामायण पढ़ी, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा. बोला WhatsApp में आया था सब. तो आया हुआ ही होगा ना. The WhatsApp में आया तो हुआ ही होगा, because WhatsApp has a filter which leaves everything that is false out and only the truth filters through. So see, this whole lack of depth in engagement is not anything to do with mythology or with the kids back there or with us at whatever age we are. It is a overall societal malaise that you do not want to go deep into anything. And that is the reason why politicians are able to hijack a genuine thing and create it into a vote pact. Because for the simple reason that it's a superficial thing. When it is a superficial thing, it is very easy to hijack it. उनको पता है जब कुछ ऐसा कहा जाएगा जो controversial है, nobody is going to go into the depth of it to see whether it is genuine or not. What was actually meant. People will read the first 3 lines and take a stand. And that stand will become their reason for existence. है ऐसे. अरे कुछ भी ऐसा नहीं होता. जो भी होता है, in Hinduism, the opposite is equally true. Right. Thank you. So one important thing where we have learned this time is that when we are going to read a book, so we are not only reading the characters, the authors are also in that, right? So when we are reading this particular book, so not only Ram is there, we are going to find a glimpse of Vikrant and Nilesh along with that, because it's very important to understand when we are reading. Yes, reading habit. Yes, literature students, you are just nodding, so you have to start reading. And this is the book you are going to buy and read and give some assignment on that after the session. Sunani ma'am is having a lot of fun here, right? तो मैं कल एक सेशन की तरफ दोबारा जाना चाहूंगी सर. वी वुड लाइक टू एंड विद दिस बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन. सुरेंद्र शर्मा सर ने बहुत अच्छी बात कही थी जो शायद दिल को छू गई हम सबके. उन्होंने कहा कि एक इंसान ने मुझसे पूछा कि तराजू में अगर एक तरफ राम को रख दिया जाए और एक तरफ सुरेंद्र तुम्हें रख दिया जाए तो पलड़ा किसका भारी होगा. तो सुरेंद्र शर्मा जी ने जो उसका जवाब दिया, शायद वो हमारी आंखों में आंसू भी लाया और दिल को छू गया. वो कहते हैं कि मैंने तो बड़े तन के कहा कि सुरेंद्र शर्मा जी का जो पलड़ा है वही भारी होगा. कहते वो कैसे? कहते उस पलड़े में सिर्फ राम है, उस पलड़े में तो सुरेंद्र भी है और राम भी है. So the only point and so many lessons in just in 40 minutes. और जब हमने आशु मैम में सेशन स्टार्ट किया, मैंने कहा कि I am going to introduce Nilesh when there will be the audience because they are coming from Pine Court. I thought she had forgotten. Do we need to introduce the literary, this luminary in front of us? I don't think so. You just Google it out and you will get to know who he is, right? Yes, he is a management person, right? He rightly said he is a poet.
Recently, I was going through one of the poem which you have written, which has taken up my heart out. That is Mukhota. कि कितने मुखौटे हैं दुनिया में, वो क्या क्या हैं, और it We should have you recite it if you remember. yeah, if you have time, Ashu ma'am, then. Yeah, please do that. Very close to my heart, I'd love to do this. मुझे लगता है सुनैनी मैम मैं पढ़ ही लेती हूँ ना, आई थिंक सो, राइट, बिकॉज सेशन से पहले वही सोच रहा था कि मैंने इतनी मुश्किल से जो लिख के दिया वो तो पढ़ा ही नहीं गया मेरे बारे में, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग ऑल दैट? हम यही डिस्कस कर रहे थे दिनों से, नीलेश कह रहे हैं पूर्णिमा क्या करना है, मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है, बस स्टेज पे जाना है, वी आर गोइंग टू रॉक इट, राइट। ये नोट्स बनाए थे, ये खोले भी नहीं हमने इस सेशन में, सी this is the value you are having. So just I'm going to read the first two lines, and he is a versatile professional, is a management graduate, entrepreneur, poet, theater actor, voiceover artist, public speaking and creative writing coach, and cricket commentator. बस सर नहीं, अभी और कुछ है, मैं बता। सर हमारे लिए भी छोड़ दीजिए कुछ, we are also going to do something. I wonder if I have that poem. सर ये तो आपको ढूंढनी पड़ेगी आज, आशु मैम नहीं जाने देंगे तब तक। सेकंड दीजिए, तब तक आप कुछ बोलते रहिए ना। हाँ सर, वो एक्चुअली दे विल बी फेड अप विद मी बिकॉज दे आर लिसनिंग मी फॉर द पास्ट 2 days on the stage again and again. So lot of lessons we have learned in from. It is there on my mail. सर अब बोलना शुरू किया था मैंने अब। हाँ बोला, आप बोलिए तब तक मैं। नहीं सर, अब आप ही बोल लीजिए मुखौटा। I have it. Oh, sorry, I don't have the poem here. You can all go to Facebook. It's there on my Facebook page. Nilesh Kulkarni. You can listen to it there. I don't have it here right now. I'm so sorry. So lot of lessons we have learned, right? So what are the lessons? It's not a kind of a class going on, but yes, we have to keep our words. That's what Nilesh has rightly said. Whatever we say, we have to keep that word. Number 2, मर्यादा हमेशा होनी चाहिए. Or third thing, which I don't know, we have said it unsadly, but yes, we are not going to judge anyone because we don't know what kind of situation that person, he or she is in particular situation. Because until or unless we are not putting ourselves into the shoes of that person, we have no idea actually what that is. And rule number 4 of reading always says, read a lot. Right? What the problem with the readers like us is that we read one book and we make the judgments. Okay, ये है, ये तो ऐसा ही होने वाला है भाई, right? But no, the lessons we have learned in this literature festival 2024, every year we are doing this, and we are urging our students and all the scholars read a lot, because that is the only thing which we are going to make a better human being. Right? Sorry. Because अब भी नहीं मिला। नहीं मिला, कोई बात। So we are going to go to Facebook and we are going to. Next time. Sir, now we are going to close the session, but before that, your last comments. Anything you want to say to our young audience over here? Learn to value keeping your word. It's a badge of honor for you. It is something which will always result in an orderly society. It is something which will bring order to the chaotic situation in which we are now. Because if I believe that the person sitting across me is going to honor what he or she has said, life becomes much simpler. If you are fed up of all the falseness, if you are fed up of all the complications, if you are fed up of all the stress going around, just give a word, honor it, and keep it. The moment you start doing that, not only will you become better off, the whole societal situation will become much simpler, much more honorable, and much more easy to handle, and it will be a personal gain to yourself. You don't keep your word because of someone else. You keep it because you want to be honorable, you want to be respected, you want truth to prevail. So just do that. Don't give a word, say no, but when you give a word, make sure that you keep it. That's my last lesson. So yes, thank you so much, sir. And let me tell you and inform all the audience over here that he has promised and kept a word that I am going to be part of Literature Festival 2024. It took a lot of time to manage and get his time this time, but he made it. Thank you so much, sir, for keeping your word. And it's an honor to have you here. Now, and really? It's an honor. Over to the anchor of the session. Wow, what a wonderful and interactive session it was. Now I request
A picture of this. Yeah. Just a moment. He's there. He's there. Those pictures take their lifetime. Just a moment. A picture with them. Yes. Chal, now, as good friends. Thank you. Thank you. Thank What you. a session. I'll request Poonam ma'am to please facilitate Nilesh sir. Thank you so much. What a session it was. Now I would request Chancellor sir, please, and Ma'am Khosla to be on stage, Ashu ma'am to facilitate our speaker of the day. It's an honor for us that Nilesh sir has made this time also to the Literature Festival 2024. With a promise that he will be here with us in 2025 also. तालियां तो बनती हैं, and I told you in the beginning that we are in the second last session of the day, and I focus on the second last because it gives us energy. Second last. आशु मैम, इतनी जल्दी से हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आ जाइए, क्योंकि this is the much awaited session of our literature festival. Please be on the stage, and it's our honor to have these two very renowned personalities here with us and very close to our heart. They were here with us last year also, and with on the public demand from Shoolini, they are here with us again. I request Ashu ma'am to introduce the speakers. आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए एक स्पीकर के लिए तो यही काफी है। जब तक स्टेज पर आते हैं आप आनंद लीजिए। आइए राज जी और तालियां। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम। तो शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये गाना किस लिए बजा है, क्योंकि जो ये बोल लिखे हैं बहुत खूबसूरत से गाने के, जो बहुत ही हिट हुआ अभी रिसेंट टाइम्स में, उनके जो बनाने वाले हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। और सच में हमने पहले सोचा था कि इस सेशन का नाम यही रखते हैं, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, क्योंकि आप दोनों पिछले सेशन में पिछले लिट फेस्ट में भी हमारे साथ थे। तो राजशेखर तो पोएट है, राइटर है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और फिर कहूंगी लिरिसिस्ट है जो बॉलीवुड में लिखते हैं। सेम गोज फॉर पवन जी, आई विल से वंडरफुल वंडरफुल पर्सन, पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट हु स्टडिंग हियर। स्वर कहाँ हो? बैठा नहीं था? हाँ यहाँ है। और बहुत एक जुड़ाव है इनका शूलिनी यूनिवर्सिटी से, जो कोविड के दौरान शुरू हुआ था, जब हम लंबे लंबे वेबिनार्स किया करते थे बच्चों को एंगेज करने के लिए। और हिंदी फिल्म्स पे, हिंदी फिल्म के म्यूजिक पे कुछ भी अगर आपको किसी को जानकारी चाहिए हो तो मेरे से इनका नंबर ज़रूर लीजिए। जयपुर से आए हैं पवन झा, वैसे टेक्नोलॉजी में अपना डे जॉब करते हैं, बट आई थिंक बाय पैशन ही इज़ म्यूजिक लवर, सिनेमा लवर, आर्ट लवर, बहुत अपने ज़माने में थिएटर भी किया है। और राज को हमने सुना था पिछली बार, बहुत ही मज़ा आया था। वो सेशन दिल पे अभी तक छपा हुआ है, और कभी कभी उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है राज। तो वेलकम बोथ ऑफ यू। और आज का सेशन जो है उसका नाम हमने लिखा है बोल लिखे हैं। तो हम में से कई लोगों जो रेडियो सुना करते थे या करते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लाइन है जो रेडियो जॉकीज कहते हैं, जब एक सॉन्ग प्ले होने वाला होता था और म्यूजिक के अलावा, फिल्म के अलावा जब वो बोलते थे बोल लिखे हैं, तो पता चलता था कि ये खूबसूरत शब्द गाने के कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये सेशन आज राज जी से बात होगी उनके बोलों पर, और फिर हम बात करेंगे इन जनरल सिनेमा के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न जो आप दोनों के लिए है,
और मैं पहले से ही बता दूं कि थोड़ा टाइम लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी करेंगे जितनी बातें हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बोल, ये जो लिरिक्स हैं, फिल्म म्यूजिक के लिरिक्स हैं या गाने हैं, इनका क्या महत्व है? शुरू से इंडियन फिल्म्स ने गानों के ऊपर, कई बार तो पुराने जमाने में 17-17, 18-18, 20-20 गानों वाली भी फिल्में हुआ करती थी। तो फिल्में जो हिंदी या मतलब इंडिया में बनती हैं, उनमें गानों का क्या महत्व है? क्यों गाने इतने इंपॉर्टेंट हैं फिल्मों के लिए? पवन जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ। मेरा व्यू आउटसाइडर का व्यू आएगा, इनका इनसाइडर का आएगा, तो दोनों मिलके सबसे पहले तो आशु ने जो बोला, तो सबसे पहले तो शूलिनी में दोबारा आए हैं हम। तो पिछले साल एक वादा था, आशु से वादा था, राजशेखर से वादा था और पहाड़ों से वादा था कि हम दोबारा आएंगे। भले ही आशु बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन हम लोग आएंगे, भले ही अपने किसी उसके लिए। पहाड़ इतने पसंद हैं, इतने प्रेम से बुलाते हैं यहाँ, जिस किस्म का प्रेम। तो सबसे पहले तो शूलिनी यूनिवर्सिटी को धन्यवाद हम लोगों को बुलाने के लिए, और फिर से बुलाने के लिए, एक मंच के लिए। और बात जहां तक करें हिंदी फिल्म संगीत का, और संगीत में भी गीत की, गीत के बोलों की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे सिनेमा। और एक्चुअली अगर हम देखें तो फिल्म सॉन्ग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सिनेमा। उनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है सिनेमा के बिना, जब वो शुरू हुए, कंसीव हुए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बाय प्रोडक्ट था, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से बड़ा हो गया। एक अमेरिकन स्कॉलर हैं जो फिल्म म्यूजिक पे लिखते हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, बहुत खूबसूरत लाइन है, कि फिल्में फानी हैं और गीत अमर हैं। फिल्मों की बहुत एक शेल्फ लाइफ डेफिनेट है, बट सॉन्ग्स आर इमॉर्टल। और जिस तरह का इंपैक्ट फिल्म म्यूजिक ने हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में किया है पिछले 100 साल में, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स हैव बिकम द फोक सॉन्ग्स ऑफ आवर जनरेशन। They have actually become the folk songs of our generation. आज आप किसी भी शादी में देख लीजिए, आज पहले हमारे साथ मैम बैठी हैं जो सुरिंदर कौर जी की नातिन हैं, और प्रकाश कौर और सुरिंदर कौर, जो जिनके गीतों को सिनेमा ने अडेप्ट किया। लेकिन आज हमारे जीवन में जो फोक म्यूजिक का जो जगह थी, हमारे घर के किसी फंक्शन में, शादी ब्याह में, सब जगह, सबकी जगह हिंदी फिल्म म्यूजिक ने ले ली। फिल्म सॉन्ग्स बजते हैं वहां पे, प्री वेडिंग के गाने ले लीजिए, वेडिंग के लेडीज संगीत में परफॉर्मेंसेस ले लीजिए। तो ये हमारे जनरेशन के फोक सॉन्ग्स। और देखेंगे अगर हम सिनेमा की हिस्ट्री, बहुत पुराना फॉर्मेट नहीं है, 125 साल पुराना फॉर्मेट है। 1895 में ल्यूमिनेयर ब्रदर्स जब आए थे, 125 साल हुए हैं, बट द वे इट हैज स्वेप्ट ऑल अदर मीडियम्स ऑफ आर्ट्स, एंड जो इसकी जो पॉपुलर इंपैक्ट, जो मास इंपैक्ट है, वो वैसा आज तक किसी मीडियम का नहीं हुआ। ना ड्रामा का हुआ, ना डांस का हुआ, ना हमारे किसी फोक फॉर्मेट का हुआ, जितना जो एक मास लेवल पे इसका वो हुआ। एंड समवेयर ये हमारे जनरेशन में जो सिनेमा का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि द आर्काइवल वैल्यू इट हैज गिवन टू अस। हमने मीरा को कभी नहीं सुना, वो कैसे गाती थी। हमने कबीर को कभी नहीं सुना कि वो कैसे गाते थे। बहुत सारे तो उनके अभ्रंश मिलते हैं, हमें पता ही नहीं है कि इतना ऑथेंटिक कैसे गाते थे कबीर। अमीर खुसरो को नहीं सुना, लेकिन हमने लता मंगेशकर को सुना है, हमने बेगम अख्तर को सुना है, हमने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सुना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पास उस विजुअल मीडियम में एक सोर्स ऑफ ट्रुथ में डॉक्यूमेंटेड है। इट इज अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। एंड ये सिनेमा का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उसने हमारी एक कल्चरल हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा है, आर्काइव करके। लेकिन अब हम बात करते हैं फिल्म सॉन्ग की, तो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। वैसे हम देखें तो कहा, जब सिनेमा 125 साल पुराना है, उसको जब अपने पास इन्फ्लुएंसेस की जरूरत पड़ी स्टोरी कहने के लिए, तो स्टोरीज कहां से आई? लिटरेचर से आई। टैगोर थे उस समय, और प्रेमचंद थे, बहुत सारे लोग थे कंटेम्परेरी। उसके अलावा जो पुराने शेक्सपियर थे, पुराने हमारे जो
रामलीलाएं थी, महाभारत थे, शुरू के दौर में आप देखेंगे माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत बनी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर था। लेकिन वो तो इट इज सिनेमा इज अ मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो गाने कहां से आ गए? अब यहां देखिए, जब रामायण होती थी तो उसमें भी बीच बीच में वो जो एक मंडली है बैठ के वो गाना गा रही है। तो जो उसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट था, अगर हम दास्तान गोई की बात करें, किस्सा लैला मजनू का, या पारसी थिएटर की बात करें जो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट था सिनेमा के लिए, उसमें भी वो कैरेक्टर बीच बीच में शेर बोल रहे हैं। जब हैमलेट को किशोर साहू ने इंडिया में इंटरप्रेट किया तो उन्होंने उसको म्यूजिकल फॉर्मेट रखा, बीच बीच में कैरेक्टर्स, या सोहराब मोदी की हम बात करें तो बीच बीच में वो उनके शेर आ जाते थे। तो समवेयर ये पोएट्री एंड म्यूजिक, सिनेमा ने जिस फॉर्मेट को अडेप्ट किया शुरू में, ये उसी का पार्ट था। और इसीलिए जब पहली फिल्म बनी आलम आरा बोलते सिनेमा में, तो वहां गाने आए और वो इतनी पॉपुलर हुई फिल्म। और यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रेडियो एंड रिकॉर्ड्स मेड फिल्म म्यूजिक द फर्स्ट डायरेक्ट टू होम ट्रांसमिशन। सिनेमा आपको देखने जाना पड़ता था, आप कितनी बार देखेंगे एक फिल्म को, लेकिन उसका गाना रोज आपके पास रेडियो में आ रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट था, जो उसकी मास अपील थी, जो उसकी रीच थी, वो सिनेमा से बहुत बड़ी थी। इसीलिए वो सिनेमा का रिकॉर्ड्स एंड रेडियो की वजह से वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो गया। लेकिन जो हम अगर हम एक्चुअल हिस्ट्री पे जाएं कि कहां से आया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बहुत छोटी सी स्टोरी है। वाजिद अली शाह का कोर्ट था, उसमें एक उनके दरबारी थे आगा हसन अमानत, 1830-40 के आसपास की बात है। एंड वो थे दरबारी रॉयल कोर्ट के वाजिद अली शाह के, लेकिन उनके मन में भी बड़े पॉपुलिस्ट से आते थे कि यार मैं आम जनता के लिए कुछ लिखूं। लेकिन वो दरबारी थे तो उनके ईगो पे बड़ी चोट लगती थी कि यार इतना हल्का फुल्का लिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने एक नाटक लिखा जो पूरा म्यूजिकल था, लेकिन अपने नाम से नहीं दिया। और वो नाटक जो था, इट बिकेम द बेस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उस नाटक का नाम था इंद्र सभा, और उन्होंने एक एनोनिमस नाम से पब्लिश किया। गलती क्या हुई कि उसमें 71 जो गजलें थी, उसमें 2-3 में उनके तखल्लुस रह गए, तो वो पकड़ में आ गए। जब उन्होंने गजलें दी ना तो पकड़ में आ गए। तो जब पकड़ में आ गए तो वो ये एक उसको एक पॉपुलैरिटी मिली उसको, और वो इंद्र सभा बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट थिएट्रिकल इन 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी। और 1931 में आलम आरा आई, उसके बाद 1932 में इंद्र सभा आई। और इंद्र सभा का आज भी रिकॉर्ड है कि उस फिल्म में आज भी 71 गाने हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, क्योंकि इट वाज मोर हर थोड़ी देर के बाद। तो उसका जो पॉपुलर डॉक्यूमेंटेशन मिलता है वो इंद्र सभा में मिलता है। और इंद्र सभा उस समय बहुत बार बनी। और देखिए, जब पहली फिल्म से जब वो सुपर हिट हो रही हैं और गाने एक पब्लिसिटी मीडियम की तरह घर घर में जा रहे हैं रिकॉर्ड से और से, तो लोगों को लगा ये तो बहुत एसेंशियल फॉर्मेट है। इनफैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में एक फिल्म डायरेक्ट की। तो शुरू में इन्होंने क्या किया सिनेमा ने, कि टैगोर जब प्ले कर रहे हैं तो उसको जाके कैमरे पे शूट कर लिया। उस फिल्म का नाम था नातिर पूजा। तो टैगोर ने फिल्म नहीं बनाई, डायरेक्ट नहीं की, उन्होंने प्ले को डायरेक्ट किया, लेकिन वो थिएटर में रिलीज की। तो उसमें भी गाने थे। तो हमारे बंगाल में जाएंगे यात्रा फॉर्मेट है, महाराष्ट्र के फोक में वैसे ही हमारे लावनी से लेके सब कुछ म्यूजिकल है। जो इवन नाट्य, लोक नाट्य की जो हम बात करते हैं ना, भरत के नाट्य शास्त्र में म्यूजिक का अपना सिग्निफिकेंस है। तो ये म्यूजिक हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट कंपोनेंट रहा स्टोरी टेलिंग का, जो कि हॉलीवुड में नहीं था, जो यूरोपियन सिनेमा में नहीं था। अगर हम म्यूजिकल्स को छोड़ दें, जो कोर म्यूजिकल्स थी, लेकिन जो प्रॉपर सिनेमा था, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह थी जिसने सॉन्ग्स को जगह दी, और सॉन्ग्स ने कहीं उस फिल्म से बड़ी जगह बना दी। आज भी हमें फिल्म याद नहीं रहती, गीत याद रहते। और एक बहुत छोटा सा इसके साथ क्या हुआ कि उस समय कारदार साहब थे जो लाहौर से आए थे, कारदार स्टूडियो वाले। उन्होंने सोचा यार ये एक बार मैं बिना गानों की फिल्म बना के देख। उन्होंने एक बिना गानों की फिल्म बनाई 1937 में, और पूरी तरह से फ्लॉप हुई। बहुत अच्छा। तो उसके बाद तो ये मान लिया गया कि बिना गानों के फिल्म हो ही नहीं सकती।
वहां से सिनेमा में गाने। ग्रेट। तो आई थिंक राज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मेरा तो बस मन कर रहा है पवन दादा को सुनते रहे। नहीं नहीं, सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि मतलब शूलिनी वापस आने का मौका मिला। और जब गाना बज रहा था तो मुझे यही लगा कि अरे ये गाना तो यहाँ के लिए भी है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। इस बार नहीं, पहली दफा ये मिल के लगा था। राइट। तो ये जो गाना लिखा है, ऑफ कोर्स ये फिल्म थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी रही। गाना म्यूजिक में ढल जाता है, सिनेमा के पर्दे पर आ जाता है, बट जो प्योर फॉर्म में गाना है जिस तरह से आपने लिखा था, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप एक बार हमें पढ़ के सुनाएं जो आपने ये इसको एक पोएट्री फॉर्म में जैसे लिखा था, तो प्लीज। तो जिन लोगों ने एनिमल देखी है, नहीं देखी है, पूरी फिल्म में जो नायक है उसका, जो फिल्म का नायक है, वो असल जिंदगी में वो है कि नहीं पता नहीं। जो फिल्म का नायक है वो पूरी फिल्म में बहुत इंटीग्रिटी वाला किरदार है। वो झूठ नहीं बोलता है। जो एक नायकों की जो हमने परिभाषा पढ़ी है उसमें वो उसका ये पार्ट जो है बिल्कुल सही है। वो झूठा नहीं है कहीं पे। फिल्म में सिर्फ एक जगह वो आता है जहां पर कि वो जो बोल रहा है और वो जो मीन कर रहा है, उस दोनों में एक फासला है। और आपके लिए ये एक बहुत मुश्किल का काम है कि आपको उस सिचुएशन पे एक लव सॉन्ग लिखने को मिल रहा है जिसमें कि आपको पता है कि ये ट्रू नहीं, इसका प्यार ही सच्चा नहीं है अभी यहाँ पे। तो अब ये एक पेचीदगी थी उसमें। इसीलिए उसमें फॉरएवर्स के वादे नहीं किए जा सकते थे उस गाने में कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे या जिंदगी अच्छी होगी। तो इसीलिए उस मोमेंट को लेकर के ही या पास्ट को लेकर ही कुछ ऐसा लिखना था। और उसमें एक वो पेंच भी है कि वो जो स्पाई वाला पूरा यस। ये है। या तो जो पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, में एक एक क्वेश्चन मार्क भी है कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूं क्या। वो भी है उसमें रोमांटिक लाइन के साथ। मैं, जैसा आपने कहा, मैं पढ़ता हूँ कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा, तुमने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो पता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब इसको बिना तामझाम के, बिना सेलुलॉइड के, बिना म्यूजिक के सुनो तो मुझे लगता है कि उसका मायने ही बदल जाते हैं। और तब निकल के आता है कि लिरिसिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त जब उन्होंने ये लिखा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन राज आपसे पूछती हूँ कि जो लिरिसिस्ट का प्रोसेस होता है, आई मीन जब बॉलीवुड के लिए, फिल्मों के लिए आप गाने लिखते हैं तो कैसा रहता है? उसमें ये प्योरिटी ऑफ थॉट, यू नो, क्योंकि एक होती है कविता जो आपके मन से निकलती है, किसी भी टॉपिक के बारे में निकलती है, इसमें काफी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, सीन का कंस्ट्रेंट्स, टाइम का कंस्ट्रेंट भी, आई एम श्योर। तो कैसा रहता है ये प्रोसेस? अब क्योंकि आदत हो गई है लिखने की, तो मतलब अब शिकायत नहीं है कोई इस तरह से। मगर अब इनफैक्ट आप कल ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आ, आ, ये मुश्किल नहीं लगता है कि एक मतलब आप धुन भी पहले से मिली होती है हमें। हम धुन पे, ज्यादातर गाने जो हिंदी फिल्म में आप सुनते हैं, हमें धुन पहले से दी जाती है। जिसके बारे में कैफी साहब ने कहा था ना, कि कैफी साहब ने कहा था कि ये वैसा ही है जैसे कि हमने ताबूत पहले बना लिया और उस नाप का मुर्दा ढूंढ रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है। आप एक एक, और सच बता रहे हैं, जिस वक्त आप गाना लिख रहे होते हैं तो जिंदगी भर मैथ्स से भागते रहे। पर गाना लिखना असल में बिल्कुल मैथ्स वाला काम है। आपको जो मीटर है,
जो एक शब्द है गाने का, मीटर बोलते हैं कि बहर जिसको, कि आप एक एक लाइन में और दूसरी लाइन में अगर वो मीटर सेम है तो आप अपने मन से उसको ज्यादा उसमें आपका मन कर रहा है कि लिख दे कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये है चलो एक बार फिर से अजनबी क्यों ना बन जाए हम दोनों, ये नहीं लिख सकते आप क्योंकि उतनी जगह है आपके पास। तो ये एक तो ये कंस्ट्रेन है कि मीटर धुन वाली बात होती है, पर धीरे धीरे हम ढाल लेते हैं खुद को उस चीज में। अब थॉट भी मीटर्ड ही आते हैं। तो हाँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको खुद खुद दिमाग ना छांटने लगते, नहीं नहीं इतना बड़ा थॉट कैसे मेरे पास अभी 10 सिलेबल है, 10 सिलेबल में एक में, तो एक अपने साथ ना मोल भाव लगातार चलता रहता है। कई बार आप ये विश करते हैं कि अरे यार ये म्यूजिक डायरेक्टर ना अभी मुझे सिर्फ दो और सिलेबल दे देता ना तो मैं सदी की सबसे अच्छी लाइन लिख सकता था। बस 2 सिलेबल से मैं नोबेल से चूक रहा हूं यहाँ पे, ऐसा आपके मन में आता है। इसके फिर एक चीज है किरदार, बिल्कुल। और एक है बाजार। हाँ 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 बिल्कुल। अब कई बार दोनों का तालमेल होता नहीं है। अब आपके पास किरदार है एक छोटे कस्बे का और आपको मांग की जाती है कि यहाँ पे क्लब का नंबर, क्लब का गाना चाहिए। तब वो छोटे शहर का किरदार गाना, मतलब अब अजय सर बैठे हुए, इन्होंने भी उस पे एक मेरे गाने पे आपत्ति दर्ज की थी बहुत पहले कि ये यूपी का गाना है, पंजाबी गाना क्यों बज रहा है इसमें। नहीं, एक दूसरी फिल्म थी जबरिया जोड़ी, बिहार का गाना था, बिहार की फिल्म थी और पंजाबी गाना था। ये काफी वो देखा गया। दरअसल दरअसल हुआ ऐसा था कि वो म्यूजिक डायरेक्टर ने गलती से, वो किसी और फिल्म के लिए बनी थी और उस डायरेक्टर ने, उस प्रोड्यूसर के पास पैसे खत्म हो गए, उनकी फिल्म बंद हो गई। गलती से दूसरे प्रोड्यूसर आए और वहां पे वो गाना बज गया। तो उन्होंने कहा एक सेकंड ये क्या था, बोला सर आपका नहीं है, ये तो पंजाबी गाना है। बोला नहीं नहीं सुनाओ तो, हाँ यही चाहिए। अब एक फिल्म जो कि रुकी हुई है बहुत दिनों से, जिसके पैसे डूबे हुए हैं, आपको कोई आपकी प्रोड्यूसर की हाँ में ना एक चमक दिखती है आपकी आंखों में, शायद आ जाए ये पैसा कहीं से। तो हमने हालांकि कहा भी उनको कि ये बिहार की कहानी पंजाबी गाना, बोला रेडियो पे चला देंगे। तो मैं उस वक्त ये कहना भूल गया कि और बोल लिखे हैं राजशेखर ने ये पर ये जो आप कह रही हैं चुनौतियां, अब धीरे धीरे आदत हो जाती है और मजा ही आता है इसमें। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं जोड़ दूं इनकी बात जी, में जी, जी। कि सिनेमा देखिए कोलैबोरेटिव मीडियम है। एक पोएट्री तो एक इंडिविजुअल आदमी का फॉर्म है, वो अपने मन से जो चाहे वो लिख सकता है, लेकिन सिनेमा में प्रोड्यूसर का पैसा है, स्क्रीन प्ले राइटर के किरदार हैं, सिचुएशन है, डायरेक्टर का विजन है, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर की ट्यून है, उस उन सबको सोचते हुए इस पे लिखना है। और कैरेक्टर का भी बैकग्राउंड भी है कि क्या भाषा बोल रहा है, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, मतलब वो सारी चीजें सोचते हुए इनको, वहां उसकी एजुकेशन क्या है वो सोचते हुए लिखना है। अब यहां पर एक लिरिक राइटर इन सारी चुनौतियों से बढ़ के, क्योंकि ये लिट फेस्ट है, मैं उस कंपोनेंट पे इसीलिए इनके माध्यम से जोड़ना चाहता हूं कि सिनेमा को हम बहुत छोटी आर्ट मानते हैं, बहुत कमतर लिटरेचर के मुकाबले, लेकिन सिनेमा लिटरेचर कब हो जाता है, जब इनके जैसा लिरिक राइटर, या हम पुराने नामों की बात करें, शैलेंद्र, साहिर, ये जो नाम है, जब उस किरदार की, उस सिचुएशन की, उस डायरेक्टर के विजन के लिमिटेशन में रह के एक कोई ग्रेट सोशल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, उस सिचुएशन के लिमिटेशन में, तो वहां सिनेमा लिटरेचर हो जाता है एंड सिनेमा सॉन्ग बिकम्स अ लिटरेचर का एलिमेंट। अगर शैलेंद्र लिखते हैं भारत की आजादी के बाद कि आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना सुख, बच्चों का गाना है, लेकिन उनका वो स्वप्न है कि आने वाली दुनिया में भारत आम आदमी का भारत है, हम राजसी राजाओं से निकलकर एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन में आ रहे हैं। वहीं वो लिखते हैं होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। दैट इज द
सॉन्ग ऑफ कॉमन पीपल, कि राजाओं का राज खत्म हो गया। तो जब इस तरह के कॉन्टेक्स्ट आते हैं गानों में, उस सिचुएशन के लिमिटेशन के बावजूद, तब वो एक सोशल कमेंटेटर बन जाता है, वो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर बन जाता है, एक लिरिसिस्ट से बढ़कर एक लेजेंडरी आर्टिस्ट बन जाता है। बट ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं फिल्म्स में कि कई बार जब जो लिरिसिस्ट हैं उनको अपना पोएटिक जो है एज अ पोएट उनको एक मौका मिला है, जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो फरहान अख्तर पोएट्री रिसाइट करते हैं। थ्री ऑफ अस एक अभी आई थी जिसमें वरुण ने बहुत अच्छी एक पोएम लिखी है। वैसे ही ओटीटी पे अभी एक सीरीज आई है लव स्टोरीज, तो उसमें आपने एक पोएम लिखी और आपने सोशल मीडिया पे बहुत खुशी के साथ कहा था कि मुझे भी मौका मिला है, तो वो पोएम मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी सुनाइए। हाँ, लव स्टोरियाँ। तो मुझे शुरुआत में नहीं समझ में आया था कि अच्छा यहाँ जा रही है बात। तो मुझे भी प्रैक्टिस हो गई मॉडरेशन करने की। हाँ, ऐसे क्यों, बिल्कुल। दिख क्यों नहीं रहा? हाँ। तो ये लव स्टोरियां एक फिल्म मतलब डॉक्यूमेंट्री है, इंडिया लव प्रोजेक्ट के 4-5 कहानियों को मिला करके अभी एक अमेजन पे आई है। तो उसके लिए तो इसमें एक कहानी है शिलोंग की। तो वहां पर मुझे बस ये इसमें ये मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। फिल्म की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कुछ पोएटिक होना चाहिए। जो विजुअल थे वो बहुत पोएटिक थे। तो मुझे कहा गया कि इसमें कुछ, और वो जो लड़की है वो एक डायरी लिखती है, पर उसकी डायरी जो थी उसमें बहुत आर्चीज के कार्ड जैसे नहीं होते वैसे से लिखा हुआ था, जो कि फिल्म के विजुअल के साथ नहीं जा रहा था। तो मुझे कहा गया कि आप इस पे कुछ पोइट्री जैसा कुछ लिखें। तो मुझे पहली बार मौका मिला ये कि फिल्म में कुछ कविता के जैसे। तो हम पहाड़ वाले लोग जानते हैं कि बादल आपके घर में कभी भी दाखिल हो सकता है, इसीलिए हम खिड़कियों पर कांच चढ़ा कर रखते हैं। पर दिल की खिड़कियों का क्या करें? कोई इंसान अचानक कहीं से आ जाए और आप इस इंसान के प्यार में एकदम से भीग जाए। वो सामने हो ना हो, पर आपके साथ रहने लगे हर जगह, और एक बिल्कुल आम सा दिन सबसे खास बन जाए। घड़ी की सुइयां ठहर जाएं, हवाएं मध्यम हो जाएं, लगे कि कोई आपके पसंद का गाना गुनगुना रहा है। पर उसे कैसे पता चला मेरे पसंद का गाना? क्रोशिये से बने टेबल क्लॉथ पर अब मुझे कविताएं दिखती हैं। खाना बनाते हुए मुझे लगता है कि मैं दालचीनी के खूबसूरत जंगलों से गुजर रही हूँ। क्या जादू है ये? प्यार है क्या? और बाद में इसी का जवाब फिल्म के एंड में जब वो है कि नीलगिरी के पहाड़ों में एक फूल खिलता है, नीला किरंजी। कहते हैं 12 सालों में एक बार खिलता है। मेरे लिए शायद यही वो साल है। अब मुझे वो महसूस हुआ, शायद नहीं यकीन से, प्यार ही है। पर मैंने इसका इंतजार नहीं किया था। आप हवा का इंतजार नहीं करते, पर वो आपके आसपास ही रहती है। प्यार भी वैसा ही है। आप उसे प्लान नहीं कर सकते, उसे जब आना होता है आ ही जाता है। आप चाहो ना चाहो, प्यार आता है 100 जख्म लिए, 1000 मरहम ली। क्या बात है, क्या बात। थैंक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अम, मामले को आगे बढ़ाते हैं। पहले आई थिंक एक अगर ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चंस आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नीलेश सर, बिल्कुल माइक लेंगे कि अच्छा, बिल्कुल। पेशा से तो ऐसा नहीं था, पहले कविताएं लिखी जाती थी, उसको संगीतबद्ध करके। ये फर्क कब? When did this whole paradigm change? And why did it? सब बड़े बड़े शायरों की मिर्जा गालिब की पिक्चर बनी है तो क्यों बना के जी
तो नए विद्यार्थी हैं, ये नहीं, बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सिनेमा में अमूमन 95% गीत धुन पे लिखे गए हैं शुरू से। ऐसा नहीं है, ये हमारा बहुत मिसकंसेप्शन है। लेकिन होता क्या है, जब मीरा का भजन आएगा, तो मीरा का भजन तो 200 साल पहले लिखा हुआ है ना। जब गालिब की पोएट्री आएगी, वो तो बहुत पहले की लिखी हुई है। लेकिन दो पोएट ऐसे हुए जिनको इंडस्ट्री ने अडेप्ट किया, ये गुलजार साहब कहते हैं। एक थे साहिर और एक थे कवि प्रदीप, जिनकी राइटिंग्स बियॉन्ड सिनेमा वर एक्चुअली अडेप्टेड बाय सिनेमा। जो आप कह रहे हैं ना, तो वो पोएट्री, वो इतनी पावरफुल पोएट्री थी, उसमें B.R. चोपड़ा जैसे पढ़े लिखे प्रोड्यूसर को लगता था यार ये तो मेरी सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो चलो एक बार फिर से वो कहते हैं कि भाई आप मेरे को ये पोएम दे दीजिए। यश चोपड़ा साहिर को कहते हैं यार वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये मेरे को उस पोएम पे फिल्म बनानी है ना। तो ये साहिर और प्रदीप जैसे ऐसे लिरिसिस्ट हुए जिनकी वजह से सिनेमा में पोएट्री पहले आई, धुन बाद में बनी। खयाम भी ऐसे थे, क्योंकि हमारे समस्या क्या है, देखिए आप इसका एक कल्चरल एस्पेक्ट भी समझिए। अधिकतर म्यूजिक डायरेक्टर बंगाली, अनिल बिस्वास, R.C. बोराल, S.D. बर्मन, उनको हिंदी पोएट्री की समझ नहीं, उर्दू पोएट्री की समझ नहीं, तो वो तो अपना धुन दे दिया, आपको जो बनाना है इस पे बनाओ, फिट होना चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा मिसमैच, मैंने कहा ना कोलैबोरेटिव मीडियम है। हिंदी सिनेमा में बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि 90% स्क्रिप्ट्स शुरू में उर्दू में लिखी जाती थी, लगभग सबको आती थी, उसके बाद हिंदी में नहीं आई, रोमन में आई। रीजन बीइंग कि वो जो मीडियम है वो पूरा एक मिनी इंडिया है। वहां जो टेक्नीशियन होगा, साउंड रिकॉर्डिस्ट या कैमरामैन, उसको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में चाहिए, एक्टर को हिंदी में बोलना है। तो हमारा ये म्यूजिक में भी हुआ कि म्यूजिक डायरेक्टर बंगाल का है और जो पोएट है वो पंजाब का है। तो ये जब मिक्स आना है, तो इसलिए अमूमन धुन पहले बनाई जाती और धुन के बाद उस पर फिट किया जाता है गाने को, जो इन्होंने कहा। लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे ऑफ कोर्स पोएम इतनी पावरफुल थी। नीरज, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, वो इतनी पॉपुलर हुई कि बोले हम सिनेमा बनाएंगे। तो ऐसे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन लार्जली ट्यून्स पे बना। बिल्कुल जी जी उसके जैसी तो किसी की रही नहीं। जी जी बिल्कुल। वो तो जब आप शेर लिखते हैं तो आप अपने से एक वादा करते हैं कि जो दूसरा मिसरा होगा उसमें उसके बराबर का ही वो तो मैथमेटिक्स की बात है ही। पर ये जो पवन दादा कह रहे हैं कि ये अभी भी है, और अभी भी कई बार मतलब ऐसा लगता है अब क्योंकि प्रैक्टिस में बात है तो अब वो लगता। पर जैसे तनु वेट्स मनु के गाने जब मैंने लिखे थे, और तनु वेट्स मनु के सारे गाने वो पहले लिखे हुए, उसके बाद उस पर धुन बनाई, क्योंकि आनंद राय साहब जो डायरेक्टर है हमारे, आ, उनको ये था कि हम लिरिक्स पहले सुनेंगे, हम क्या कहना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे कहना है वो हम बाद में सोचेंगे। तो अभी भी जी। और एक और चीज है इसमें, ये कभी ऐसा नहीं होता कि आपको धुन बना के दे दी और लिरिक्स लिखने हैं। ये एक म्यूजिक सिटिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक सिटिंग, दो सिटिंग, 100 सिटिंग के बाद भी वो एक दूसरे को एक दूसरा इम्प्रोवाइज करता है। वो कहता है यार कि मतलब इट इज अ कोलैबोरेशन, इसीलिए तो कोलैबोरेटिव मीडियम है। दादा इसमें अब एक दिक्कत क्या हो गई है, कि अक्सर धुन हमें व्हाट्सएप पे मिलने लगी है अब। अच्छा। ठीक है, मेरे फोन पे अभी कम से कम 50 धुन होगी। वर्क फ्रॉम होम। और ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी फिल्म के मैंने गाने लिखे, मैं डायरेक्टर से फिल्म के प्रीमियर पे मिला हूँ, और म्यूजिक डायरेक्टर से फिल्म के मिक्स, मतलब जब गाना मिक्स हो रहा है वो भी इसलिए कि एक वर्ड गलत है उसमें, तो मैं, अच्छा वो चेन्नई के हैं तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या फर्क है,
तो कह रहे हैं कि नहीं ये कैसे करें, ये कैसे करें। अब वो चेन्नई से बना रहे हैं, वो मुझे भेज रहे हैं, मैं लिख के यहाँ से भेज रहा हूँ। अब हमें इसमें कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि दोनों को समझ ले कहीं पे। तो ये अभी सिटिंग वाला मामला थोड़ा सा कम हो गया है। लोग सोचते हैं कि जितने देर में हम सिटिंग करेंगे उतने देर में और हम 5 गाने बना लेंगे। बट मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस क्रिएटिव प्रोसेस की यहाँ पे आपको बताने की, क्योंकि हमारे सामने ब्रह्मानंद सिंह भी बैठे हैं जिन्होंने आरडी बर्मन के ऊपर नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई है। एंड मैं आपको बताऊं, आप आरडी बर्मन की म्यूजिक सिटिंग सुनिए, उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। द काइंड ऑफ प्रोसेस, द एंजॉयमेंट, द फन ऑफ इट। एंड उसमें क्या होता है, जब म्यूजिक डायरेक्टर भी जब पहली बार धुन बनाता है ना, तो डमी वर्ड्स डाल देता है, डा डा डा। जैसे प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, उसको उन्होंने बनाया रूप तेरा मस्ताना होगा जी, उसने अपनी तरफ से बना दिया। उसके बाद लिरिक्स राइटर को अब उस पर डालना है। यह आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एस डी बर्मन की एक फिल्म थी, उसमें इंसान जाग उठा, उसमें गाना था, जानू जानू री काहे खन के है तेरा कंगना, डुएट था। उस पे लिखा बापू बापू जी बकरी का दूध लेके आए। तो इस तरह ये मतलब लिटरली ये जो म्यूजिक डायरेक्टर, तो कुछ भी सेंस नहीं है, तो वो उसको जो वर्ड फिट हो रहे हैं अपनी धुन में, वो मीटर वहां से बना, मीटर वो डिसाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। गजल जब लिखी जाती है तो गजल का मीटर पोएट डिसाइड करता है, फिल्मी गीत का मीटर म्यूजिक डायरेक्टर डिसाइड करता है, बट गजल में क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मीटर है, वो पोएट डिसाइड है ना। तो मतलब इस तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आप आर डी बर्मन की म्यूजिक सिटिंग सुनेंगे, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत और इतना एनर्जी, इतना पैशन उसमें रहता है। ये अपने आप में एक बड़ा मजेदार प्रोसेस है। आप कल बात करेंगे। जी जी, क्वेश्चन है। Yeah. जी हाँ हाँ। हाँ, कटघरे में मैं ही खड़ा हूँ, तो मैं नहीं, मुझे उन लोगों को भी डिफेंड करना होगा जो कि ये बना रहे हैं डिफेंस लॉयर की तरह। देखिए सर, आपने जिस 2 गाने, बहुत मजेदार बात की आपने, जिस 2 गाने का जिक्र किया आपने, आ, दोनों कहीं ना कहीं फोक इंस्पायर्ड है। लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे कारण, ये इस गाने से इंस्पायर्ड होके ये गाना बना। और वल्गरिटी को मतलब हर समय का अपना, वो एक लाइन है कि पाप है क्या ये पुण्य है क्या, रेतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या तुम पाओ। ये हर वक्त का अपना एक मॉरल कंपास होता है। हो सकता है कि मुझे आज इस साल जो गाने में, मैं नहीं सुनता हूं अभी के गाने ज्यादातर, कुछ लोगों के अलावा, पर अब भी अगर आप बिल्कुल आज के यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करेंगे तो उनको आज के ही गाने कर्णप्रिय लग रहे हैं। तो एक तो वक्त की बात भी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक उम्र के साथ हमारा, जिन दिनों में हम जवान हो रहे होते हैं, उन दिनों के साथ एक हमारा अलग रिश्ता होता है। अभी भी सामने उतनी खूबसूरत होती है मुझे लगता है, पर आपकी बात में मैं कहूँगा आंशिक रूप से सत्यता है उसमें। सर, पैसे का लोभ है या वक्त बदल रहा है, वक्त की बात तो कर ली, पैसे का लोभ। हम्म,
हमेशा रहा है। और मैं ऑनेस्टली सर, मैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल, और बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा है कि जाने कहाँ गए वो दिन वाले, उसमें नहीं हूं मैं। अभी भी बहुत अच्छे गाने लिख रहे हैं लोग, अच्छे गाने बना रहे हैं। संख्या कम हो सकती है। अब एक बार एक 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 गाने को लेके हाल के सालों में बहुत बवाल उठा। उस गाने को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला। उस गाने का नाम था अपना टाइम आएगा। पर्सनली मुझे वो गाना, उस पर बहुत जब विवाद हुआ कि इसको क्यों मिलना चाहिए, ये हमारी भाषा खराब कर रहा है, पर उस गाने के किरदार को अगर आप देखें, वो एक चौल में रहने वाला एक लड़का है जिसके पिताजी अपनी दूसरी शादी करके अलग फैमिली के साथ जा रहे हैं। उसके पास कुछ नहीं है। उस वो उसका जो उसकी जो पूरी कविता है, उस वो एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्से से निकली हुई कविता है। उसी उसी गाने में एक लाइन है जो कि उस पूरे गाने को जस्टिफाई करती है कि मेरी शब्दों की ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, आएगा आएगा अपना टाइम आएगा। एक बिल्कुल निराशा भरे माहौल में वो लड़का शब्दों से ज्वाला ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में किरदारों के साथ, कहानी के साथ भी हमें देख रहे हैं। अब भी एक बस एक और चीज कि हम तो कह रहे हैं कि नहीं बनने चाहिए ऐसे गाने, पर ये हिट कौन करा देता है? हम तो नहीं कराते जाके, हम तो बार बार उसको क्लिक नहीं करते हैं। क्या आप में से कितने लोगों ने देखा कि कोई आपको गाना अच्छा लगा, आपने देखा कि यार ये ना इसने गाना लिखा है, इसने बनाया है, या इस फिल्म का है? कितनी बार हमने अपने तरफ से कोशिश की कि हम एक उस आर्टिस्ट को हम एक मैसेज कर दे कहीं पे, सोशल मीडिया पे बहुत आसान है, हम मोदी जी तक को मैसेज कर देते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते किसी आर्टिस्ट को कि यार ये आपका गाना बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखते रहिए, हम आपके साथ हैं, या बनाते। एक बात कह रहा हूं मैं, मेरे तरफ मेरी भी तो शिकायत हो सकती है कि मैं इतने दिनों से लिख रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मैसेजेस आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जोड़ूं इसमें कुछ आपके? आ, या, या एक, हाँ, या। ये गलत है, ये गलत है, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। हाँ जी, 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 जी। तो उसका मैं जवाब आपको देता हूं। आपके पास आज के टाइम में गाना सुनने का समय ही नहीं है, वो ठहरा भी नहीं है। आप उसे कार चलाते में सुन रहे हैं, आपको कहीं पहुंचना है, 10 तरह के थॉट्स हैं आपके दिमाग में। पहले आप घर पे आराम से बैठ के सुनते थे, तो आपके पास, आपके खुद के पास समय नहीं है गाना सुनने का, उन शब्दों पे ध्यान देने का। आप केवल हुक लाइन को पकड़ के उसको पकड़ के उस गाने को हिट करा रहे हैं। लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब पहले दे दूं। सबसे पहले तो ये मान के चलिए, सिनेमा आर्ट का फॉर्म बाद में है, व्यवसाय पहले है। किसी ना किसी का पैसा लगा है उसमें, कोई प्रोड्यूसर है, तो उसका पहला यह होता है कि जो पैसा उसमें लगा है, कम से कम वो पैसा वापस आए, है ना? तो उसके पीछे कोई प्रोड्यूसर है, कोई आदमी अपना पोयम नहीं लिख रहा है, किताब नहीं छाप रहा है। तो पहली चीज तो व्यवसाय है। दूसरी चीज, जो आपने अश्लीलता की बात की, तो अश्लील गीत 1930 में भी हुए थे, 40 में भी हुए, 50 में भी हुए, हमारी संस्कृति का पार्ट है। ब्रजभाषा में चले जाइए, मैथिली में चले जाइए, ऐसा नहीं है। जोश मलिहाबादी 1945 में एक गीत लिखते हैं, मतलब मेरे जोबना का देखो उभार, जैसे तुर्कों की फौज, जैसे लहरों की मौज। गाना सेंसर हो गया, बाद में रिलीज हुआ, लेकिन मतलब उनके जैसा आर्टिस्ट भी सिनेमा में आके, जो सिनेमा की लिए उसकी जिम्मेदारी है, जो उस कैरेक्टर की, उस सिचुएशन की जो जरूरत है, उसके हिसाब से लेके, तो ये भी जरूरी है। अब तीसरी बात यह है कि पहले के गाने क्रिएट होते थे, आज के गाने प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के गाने जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए हैं। यू आर ए कंज्यूमर ऑफ सॉन्ग्स। आपको 2 मिनट के लिए गाना सुनना है, जब तक आपकी गाड़ी चल रही तब तक गाना बजता रहे।
Doing what? Nothing but consumption. FM channel is what? Nothing but consumption. और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण 91 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया और हमारी लाइफ जो 24/7 की हो गई, जो हमारा दूरदर्शन रात को 11 बजे बंद हो जाता था, आकाशवाणी 11 बजे बंद हो जाता था, वो 24 घंटे का हो गया। 24 घंटे का स्पैन होते ही आपको प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, इसीलिए न्यूज चैनल्स का कचरा हुआ सारा का सारा, क्योंकि हमारे को कंटेंट का एक्सप्लोजन हुआ। तो आज की तारीख में आप गाना बनाते नहीं हो, आप गाना प्रोड्यूस करते हो। जो प्रोडक्शन होगा तो उसमें डेफिनेटली वो ठहराव नहीं होगा, उसके क्रिएटिव प्रोसेस में जितनी वो चाहिए जरूरत, वो उसके पीछे उसका पैसा डेफिनेटली प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले खराब गाने नहीं बनते थे, लेकिन एक और बात है यहां पर, नहीं, एक और बात है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ और जितने लोग सिनेमा में आए, सिनेमा का एक बहुत बड़ा काम क्या था? सिनेमा ने शायरों को रोटी दी। मजरूह जेल में बंद थे, क्रांतिकारी कवि थे, शायर थे, उन्होंने हिटलर का दास है नेहरू करके पोएम लिखी, जिसकी वजह से जेल में डाल दिया था। वहां उनको सपोर्ट करने, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने कौन आए? राज कपूर, और उनको पैसे देके गए। शैलेंद्र के पास राज कपूर गए कि आप मेरी फिल्म के लिए गाना लिखिए, आपने जलता है पंजाब बहुत खूबसूरत पोएम लिखी है। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं सिनेमा के लिए नहीं लिखता। लेकिन जब उनको बाद में पैसे की जरूरत पड़ी अपने बेटे के जन्म के टाइम, तो वो राज कपूर के पास गए कि आपने सिनेमा के लिए कहा था। तो सिनेमा ने अदब के लोगों को रोटी दी। वो रोटी शायरों को नहीं मिली, वो किताबों से नहीं मिली, वो कवि सम्मेलनों से वो रोटी नहीं मिली जो सिनेमा से मिली। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिनेमा का। लेकिन एक और बात है, क्यों हमारे वो फिल्मी गीत इतने बड़े हो गए कि जो लोग सिनेमा में उस दौर में लिखने आए वो सब अदब के लोग थे। साहिर पोएट थे, शैलेंद्र पोएट थे, मशरू सुल्तानपुरी पोएट थे, अली सरदार जाफरी पोएट थे। ये सब सिनेमा को उनकी जरूरत थी तो सिनेमा में आ गए, सिनेमा रोटी दे रहा था। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट से जुड़े हुए भी थे, तो उनकी एक सोशल जो कमिटमेंट था वो भी उन गीतों में आया, उन आम आदमी का दर्द भी उन गीतों में आया। आज शायद जो लिरिक राइटर बन रहा है वो एक प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए बन रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पहले के लोग, उनका कमिटमेंट उन गानों में दिखता था, वो पोएट्री दिखती थी क्योंकि वो उस अदब से आए थे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। आपने क्रिकेट देखते हैं? 1983 के वर्ल्ड कप की एक एक गेंद मेरे को याद है, लेकिन पिछला जो मैच अभी हुआ इंडिया ने जीता, उसका मेरे को कुछ भी मेमोरी नहीं है। तो हम उस समय जब हमने वो देखा था, उसके लिए जो हमारी वैल्यू थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी गानों की, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हम ढूंढ के सुनते थे, हमारा एफर्ट उसमें जाता था। आज की तारीख में हमें परोसा जा रहा है, नहीं है। आपका समय बदल गया, आपका खुद का समय बदल गया। बिल्कुल। मैं सर बताता हूँ, मेरे पास अभी सबसे ज्यादा गाने जो सुने जाते हैं जनरली प्लेटफॉर्म्स पे, वो स्पॉटिफाई पे सुने जाते हैं। मैं स्पॉटिफाई पे दिखाऊंगा आपको कि मेरे गाने का सारा डेटा मुझे मिलता है कि कौन सा किस शहर में जेंडर क्या है और किस उम्र के लोग सुनते हैं। मुझे स्पॉटिफाई या पूरा डेटा मुझे बताता है कि मेरे सबसे ज्यादा सुनने वाले लोग जो हैं वो 18 साल से 35 साल के हैं, और नॉर्थ के लोग, और साउथ में सिर्फ बैंगलोर में ऐसा सुनते हैं लोग। अब मुझे ये डेटा मेरे पास है, ये डेटा म्यूजिक लेबल के पास भी है कि कौन सा गाना कहाँ कितना प्ले किया गया। मुझे ये बात जब किसी को भी, अब मैं लिखता रहूं और मुझे पता है कि कुछ खास शहरों से में मेरे लिसनर है ही नहीं, पर कुछ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, इन सब जगहों पे मेरे लिसनर हैं। मतलब जब मैं कह रहा हूं तो ओवरऑल लोगों की बात कर रहा हूं, किसी की भी।
कोई भी म्यूजिक। कई बार मन में जरूर ये आता है कि यार यहाँ जो गाने मेरे पसंद किए गए हैं मैं उसी तरह के गाने लिखता रहूं, क्योंकि मुझे एक महीना लगेगा आउटडेटेड होने में। ये मैं एकदम वो बात बता रहा हूँ जो कि किताबों वाली बात नहीं है। एक हमेशा ये प्रेशर रहता है, आपको शायद ना मतलब नहीं जानते होंगे आप, बट ये प्रेशर भी आज के दिन में एक लिरिसिस्ट पे कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर कितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल मजाक की बात नहीं कह रहा हूँ। और इनफैक्ट इस चीज पे चुने जाते हैं। जी जी, नेताओं को आजकल होता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं इलेक्शन टिकट से पहले। तो ये सोशल एक, लेकिन एक मेरे को बहुत अच्छी बात याद आई, आपका भी सवाल उसमें है इसी से जुड़ी हुई। एक ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म थी मुसाफिर, बहुत कम लोगों को याद होगी, और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उस फिल्म में एक सीन था कि दो पुराने दोस्त मिलते हैं 55 की उम्र में, मतलब एक दूसरे को टकरा जाते हैं, जो कॉलेज में कभी पढ़ा करते थे। और पूछता है यार अभी भी तुम्हारे गाना वाना गाते हो क्या, भाभी अभी भी गाती है क्या? तो बोले यार गाने तो हमारे दौर में हुआ करते थे, ये आजकल क्या गाने हैं पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, जिसको हम लेजेंड मानते हैं, जिन गानों को हम ग्रेट मानते हैं, उस फिल्म में 1957 में दर्ज है, ये क्या गाने बन रहे हैं आजकल? गाने तो हमारे दौर में हुआ करते थे। तो ये तो हर दौर की समस्या है। मैम आपने जो बात कही ना, मैंने इसके बिल्कुल उल्टा भी देखा है। मैं एक बार होशंगाबाद गया था जंगल में, तो वहां पे 2-3 दिनों के लिए था। तो रात में कई सारी फैमिलीज थी वहां पे, और हम लोग ऐसे कॉलेज के 2-3 लड़के थे। तो रात शुरुआत दिन में शाम में 6-7 बजे के लगभग वहां पे डांस वांस वाला गा, उसके बाद वहां पे शुरू होता था अंताक्षरी, और उसमें सारे यंग लोग भी वही पुराने गाने गाते थे। और इन्होंने स्पॉटिफाई का जिक्र किया, पिछले साल पूरी दुनिया में जिस सिंगर को सबसे ज्यादा सुना गया वो थी अलका याग्निक, जिन्होंने पिछले 15 साल में कोई गाना नहीं गाया पूरी दुनिया में। हॉलीवुड पॉप म्यूजिक कोई भी जना स्पॉटिफाई पे द बिगेस्ट काउंट इंटायर वर्ल्ड में अलका याग्निक को सबसे ज्यादा सुना गया। उसके पीछे एक और कारण है कल्चरल। यूपी बिहार में जो 90 के गाने अभी भी लूप पे बजते हैं, नदीम श्रवण, आप एक फिल्म देखिएगा यूट्यूब पे जाके ढूंढिएगा नसीब, लग जा गले, आप देखेंगे 15 करोड़ व्यूज है उस गाने के, हैं बहुत ज्यादा है। उस नसीब का एक गाना है कुमार सानू का 1997 का, जो हमने उस समय सुना ही नहीं, उसके कम से कम 120 करोड़ व्यूज हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स थे जो हाथ उठा रहे थे। जी जी बोलो। नहीं ये इतने काश वो इतने काइंड होते कि कहते कि फिर से लिख दीजिए। वो अब ये कहते हैं कि आपकी जगह कोई और लिख रहा है। लेकिन मैं एक किस्सा सुना सकता हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। एक किस्सा मैं सुना देता हूँ। एक गीत है जो हम सबका बहुत बहुत फेवरेट है, और वो फिल्म थी रजनीगंधा, उसमें योगेश ने गीत लिखे थे। उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके मेरे आंगन में। और हुआ क्या कि बासु भट्टाचार्य जब सॉरी बासु चटर्जी जब फिल्म बना रहे थे, शुरू में गानों का कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने फिल्म शूट कर ली और बाद में उनको बताया कि आपको इस पे गाना बनाना है, लेकिन गाने की सिचुएशन पहले बता दी। अब योगेश को वो सिचुएशन समझ में नहीं आई, उन्होंने 7 जन्मों के प्रेम का गीत लिख दिया वहां पे। लता जी गाने आ गई, उससे 5 मिनट पहले डिस्कशन हो रहा है, उनको लिरिक का पेज चाहिए होता है लता जी को गाने के लिए, और बासु चटर्जी कहते हैं यार ये तो अभी तक अनडिसाइसिव है, शी कांट डिसाइड। तो बोले मैं तो बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर गया, और बोले अभी लता जी को 15-20 मिनट लगेंगे, आप उनको अटकाए रखो। वो सामने एक ईरानी कैफे थे, पसीने में भागे भागे गए, उन्होंने जो 2 स्टैंजाज वहां पे बैठ के लिखे और लता जी को आके पकड़ाए 10 मिनट के अंदर।
क्योंकि लता जी का एक अपना ऑरा था, एक वो था, उनके सामने कोई गलती नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो वो योगेश जी मेरे मतलब बहुत अच्छे जानकार थे, उन्होंने बताया कि मैं ऐसा भाग के गया, मैं इतना घबराया हुआ था, लेकिन वो मैंने अधिकार, ये जब से साजन का, वो इतना खूबसूरत गीत है, इतना खूबसूरत गीत है। तो कई बार क्राइसिस जो है वो आपको बहुत कुछ दे जाती है। ये स्टूडेंट्स जानते हैं जब असाइनमेंट का टाइम आता है 12 बजे के आसपास इनकी प्रोडक्टिविटी सडनली बढ़ जाती है। और क्वेश्चन एक दो हाथ मुझे और दिखे थे। कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहे? हेमंत सर, सिद्धार्थ सर। हेमंत सर पहले, फिर अच्छा सिद्धार्थ सर पहले। सिद्धार्थ। सर सोचा नहीं है कभी कि इस तरीके से। ने बोला था ना कि क्वेश्चंस चाहिए जो आपको सोचने में मजबूर हाँ हाँ हाँ। करेंगे। दरअसल सोचा नहीं है कि कभी नहीं सोचता कि ये ऐसा लिखूंगा। या दरअसल मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिस वक्त लिख रहा होता हूँ उस समय आ, एक बहुत इक्विलिब्रियम वाला स्टेट होता है, अपने से अलग होने का और अपने साथ होने का। वो बहुत मुश्किल है वो डिस्क्राइब कर पाना कि क्या होता है। कि एक एक सेंस जो होता है वो बिल्कुल पता होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वो जज कर रहा होता है, वो क्रिटिक कर रहा होता है उन लाइनों को जो कि मैं लिख रहा होता हूँ। पर एक सेंस होता है जो कि बिल्कुल जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उस हालत में मैंने अभी तक तो कोशिश नहीं की है कि मैं अपना एक स्टाइल बनाऊं या कुछ। और दरअसल ये काम आ जाने के बाद का एक वो है कि जब आप बहुत सारे काम देखें तो उसमें आप एक कोई सिरा साथ मिलता जाए किसी में। पर मैं ये सोच के कभी नहीं करता अपने से कि अच्छा उस गाने में ये हुआ है, इस गाने में ये हुआ है, हाँ एक फिल्म में जरूर कोशिश करता हूँ कि अगर मैं फिल्म के सारे गाने लिख रहा हूँ, गानों का अपना एक गाने से दूसरे गाने तक में एक ग्राफ हो कहीं पे। और शब्द जो हो वो खास तरह के, अगर किसी एक तरफ का वो पंजाबी वाला अगर वो छोड़ दें तो बाकी एक दुनिया के शब्द लगे इस तरीके से। इसके अलावा मैं मतलब कभी ट्राई नहीं करता। और इनके गीतों में इनकी जमीन दिखती है, ये जहां से आए हैं, जो इनकी एक क्रिएटिव जर्नी रही है, वो शायद वो छाप वहीं से आती है। जब ये मन्नू भैया का करी है लिखते हैं तनु वेड्स मन्नू में, तो वो इन्होंने वो सब देखा है, हो सकता है जो आजकल के बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो। तो इनकी जो वो एक्सपीरियंस है वो तो आएगा ही, खुद का पर्सनल जो है। मन्नू भैया की बात है, ये में एक छोटा सा ये बहुत Yes. वो जिक्र है इसका कि मैं आनंद एल राय जी के साथ असिस्टेंट था इस फिल्म पे। और मैं कास्टिंग देख रहा था। तब तक लिरिसिस्ट बनने का ना मेरा इरादा था और ना उनके मन में था कि मैं लिरिसिस्ट बनूंगा, मतलब इसको रखूंगा। तो हम लोग मैं भी उस डिस्कशन का पार्ट होता कि किसको सोचे, इरशाद भाई ठीक रहेंगे या हमें गुलजार साहब, नहीं गुलजार साहब तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, या जावेद साहब, मतलब इस तरह की बात चलती। निरंजन अयंगार उस समय लिख रहे थे, सोचते थे उनसे क्या। फिर वो लगा कि नहीं वो यूपी का मामला है, किसको इस तक बहुत सारा। तो मैं भी बोलता था कि नहीं इनको इनके इनसे मिलते हैं, ये मिलते हैं। फिर अचानक एक दिन कहा गया कि यार ऐसे ऐसे तुम कविताएं लिखते हो, अच्छा तुम डमी लिरिक्स लिखो तब तक इसका। और ताकि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर को ब्रीफ ना करना पड़े, उनको हम ये लिरिक्स दे दें और वो
बना के लाएं, क्योंकि बहुत सारे नए म्यूजिक डायरेक्टर्स से वो मिल रहे थे, उनके पास बजट नहीं था, तो सोच रहे थे नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को देंगे ये गाना और कहेंगे उसमें से जो अच्छा बनाएगा उसको हम रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार ये सिचुएशन है जिसमें कि ट्रेन से लड़की वाले और लड़के वाले जा रहे हैं वैष्णो देवी, इनका वो करने के लिए, शादी से पहले शादी पक्की करने के लिए, रोका जैसा कुछ ये। यहाँ पे एक गाना चाहिए ट्रेन में। तो गाने में क्या चाहिए? बोले तुम तो असिस्टेंट हो, तुम तो जानते ही हो स्क्रिप्ट, तुमको क्या बताने की जरूरत है। अब वहां पे मोहब्बत का गाना हो नहीं सकता था। जो हमारा नायक है मन्नू शर्मा, जो माधवन जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो शर्मीला आदमी है, वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, गाने की बात छोड़ दीजिए। जो लड़की है तनुजा, जो कंगना प्ले कर रही है, उन उनकी रजामंदी नहीं है इस शादी को लेके। अब आपका लड़का नहीं गा सकता, आपकी लड़की नहीं गा सकती, अब टीटी साहब तो गाएंगे नहीं ट्रेन में, अब कौन गाए? बोले सोचो तुम। अच्छा, फैमिली भी जा रही है साथ में, एक उन्हीं का आसरा था कि ठीक है, अब मामी जा रही है, फूआ जा रही है, बड़ी दीदी जा रही है, मौसा जा रहे हैं, तो अब इनसे ही होगा। तो मैंने राइटर को कहा कि हिमांशु शर्मा दोस्ती है मेरे, तो मैंने कहा मुझे एक लाइन दे दो कहीं से, अब अचानक से क्यों मामी शुरू कर देगी गाना कहीं पे। मैंने कहा एक लाइन दे सकते हो मुझे? क्या? बोला वो आलू की सब्जी और पूरी और अचार बढ़ाती है, और वो मन्नू शर्मा मना करते हैं कि यार हम नहीं खाते, और वो एक लाइन जोड़ दो इसमें कि अरे यहाँ का, आप कानपुर का अचार मना कर रहे हैं, ये जो चलती फिरती अचार आपकी जिंदगी में जा रही है कैसे मना करेंगे। उसने कहा चलो ठीक है। तो बोला क्या होगा इससे? मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा क्या होगा। फिर वहां से वो एक मुझे एक पॉइंट मिला कि, तो उसमें फिर ये आया कि अंबिया इलायची दालचीनी और केसर सुखाएगी तन्नू करोल बाग के छत पर, फिर पोस्ता पिसेगा कलौंजी कुटेगी, मर्तबान से अफवाह उठेगी, पतंग पीछे बच्चे जब आएंगे छत पर, तन्नू की सारी बरनी जाएंगे चटकर, तब मन्नू भैया क्या करी है। बहुत तो खूबसूरत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल, और पहले दिमाग में था कि यहाँ पे कुछ लव सॉन्ग कौन गाएगा, लड़की गाएगी नहीं, लड़का गा नहीं सकता आपका। तो फिर ये फैमिली का इस तरीके से, तो वो क्राइसिस में ये चीजें निकल के आई। जी जी जी, हेमंत आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा वाइंड अप करेंगे क्योंकि समय कम है। ऐसे ही सवालों से डर लगता है। छोटा है ये। जी जी बिल्कुल फिल बदी। जी गम हाँ 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 फिल सर क्वेश्चन नंबर 5A।
Only 6 out of 10 questions are. सर 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 हम बिहार बोर्ड से हैं। वहां पे लघु उत्तरीय में भी, ऑब्जेक्टिव में भी टीचरों की ये उम्मीद रहती है कि हम लॉन्ग आंसर टाइप ही लिखे। तो अपने लिए लिखते हैं। मतलब अब मेरी कोशिश ये रहती है कि एक गाने में एक पंक्ति अपने लिए लिख लूं। क्या बात, वाह। और अगर कभी वो नहीं मिल पाता तो कोशिश करते हैं कि कोई एक शब्द, कोई एक थॉट कहीं पे छुपा दूं, जो कि बाद में जब मैं गाना सुनूं तो मुझे लगे कि मैंने ये उस वो खेल है, वो एक ना गेम है जो कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ खेलता हूँ कि पकड़ पाओगे कि नहीं इस बार, कहाँ छुपाई है वो बात। और कमबख्त कुछ बार ऐसा हो जाता है कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ लगातार काम करते हैं वो कहते हैं हाँ वेट ही कर रहा था इस लाइन। तो एक तो वो है गाने में। इसके अलावा थोड़ा बहुत लिखते हैं, छोटी कहानियां, बच्चों के लिए कुछ कविताएं, जो कि ये साइकिल और इन सब चीजों में पत्रिकाओं में कभी कभी आती है। ट्रांसलेशन करते हैं। तुलिका बुक्स है एक, बच्चों का, तो हाँ तो उनके लिए हम, हाँ एक हमारी किताब वहां से, हम जंगल के जगर मगर। तो हम कई सारी दूसरी भाषाओं की, तेलुगु से इंग्लिश, इंग्लिश से फिर नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ तेलुगु से इंग्लिश, पर दूसरी भाषाओं में जो किताबें छपती हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, वो हमें फिर आता है, तो हम कई बार वो कर लेते हैं। और उसमें जो सर ने अभी पूछा कि क्या आप कोई अपना एक सिग्नेचर, उसमें हमने कुछ प्रयोग किए जो कि अब उनको ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा रेजोनेट कर रहा है बच्चों के साथ। कि उसमें डायलॉग हम नॉर्मल लिखते हैं, मतलब जिस तरीके से आम बोलचाल में है, पर जो डिस्क्रिप्शन है वो हम पद्य में लिखते हैं, तो बच्चों को याद करने में, और बहुत सारे फन, हाँ बहुत सारे साउंड फोनेटिक्स यूज करते हैं उसमें, तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो जाता है वो। आपने तेलुगु का पूछा, इन्होंने मलयालम फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं हिंदी में। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत खूबसूरत इनका जुगनुओं वाला गाना है, उसकी कुछ लाइन सुना दो, वो जो जस्टिन के साथ। सर 5B बचा रह गया। पर वो सुना देना, मतलब पहले 5B दे दो, पर उस मलयालम का गाना जरूर सुना। कई बार ना हम बहुत मिस्टिफाई भी करते हैं राइटर्स अपने आप को। हम नहीं सोए कभी अंधेरी के प्लेटफॉर्म पे। हमारे दोस्त थे शहर में अच्छे, जिनके पास कुछ पैसे थे, और ना ही हमारे महलों के ख्वाब थे। जब हम बम्बई आए तो हमें तो लगा कि यार यहाँ तो पंखा है, तो अच्छा ही लग रहा था। हमारे गांव में तब तक बिजली नहीं आई थी। अब आया दिल्ली, आए दिल्ली में हॉस्टल के एक रूम में 3 लड़के 4 लड़के, कभी कभी 15 लड़के भी रहते थे। तो यहाँ पे एक कमरे में जब 4 लड़के रुक रहे थे हम लोग, तो लग रहा था कि हाँ अच्छा ही तो है। मुखर्जी नगर के पास ही थे हम। तो हम, एक तो वो मेरे साथ वो वाला स्ट्रगल नहीं रहा कभी, या कभी लगा नहीं। बस में जाना तो लगता था हाँ ठीक है, बस में जगह मिल गई, इसमें क्या हो गया। मतलब क्योंकि मैं मतलब किसान परिवार से आता हूँ, मुझे पता है वहां एक दूसरी दुनिया भी है, जहाँ पे बस में आपकी सीट है या आपके पास एक रिजर्वेशन टिकट है, ये भी बहुत ग्रांटेड नहीं ले सकते आप इस चीज को। तो एक तो ये कभी वो नहीं रहा। हाँ एक खास करके बारिश वाले दिनों में, क्योंकि बम्बई में बहुत लंबी बारिश होती है, उन दिनों में ये कभी कभी वो प्यासा वाला जो सिंड्रोम है वो आने लगता है मन में। कई बार लगता है कि बहुत दिनों से गाने रिलीज नहीं हुए, या हम जो कहना चाहते हैं कि यार ये गाना डिजर्व करता था और इसको मिला नहीं। लोगों पे गुस्सा आता है बहुत कई बार, पर क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट रहना है तो वो नहीं
आप कर सकते हैं। मतलब लोग आप नहीं बोल सकते कि अरे जनता समझ ही नहीं पाई। इस तरीके से मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। तो ये होता है, पर आप धीरे धीरे डील करने लगते हैं। और दूसरी बात है, जिस महफिल की आप बात कर रहे हैं कि तंग आ गए हैं कश्मकश जिंदगी से, हम यहाँ पे तो सारे वैसे ही दोस्त हैं, तो किसको सुनाएंगे? सब सब वो अगर अपना सुनाने लगे तो फिर तो हम चुप ही हो जाएंगे। तो चलिए लेकिन एक इसी सॉरी 1 मिनट में बहुत छोटी सी बात, जो आपने बात पूछी लिरिसिस्ट कैसे अपनी जगह है ढूंढ लेता है एक गाने में। शैलेंद्र लिखते हैं दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, ठीक है ना, और कह के रहेगा कहने वाला। अब शैलेंद्र उसी गाने में लिखते हैं। देखिए पहले उन्होंने लिखा था आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, लेकिन भारत की आजादी को 7 साल हो चुके हैं और वो थोड़े सपने टूटते नजर आ रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं वहां पर, गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश हूं मगर आबाद नहीं मैं, मंजिल मेरे पास खड़ी है पांव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। सो वो कह रहे हैं कि आजादी मिल गई भारत को, लेकिन गम से नहीं मिली हमारी क्लास को। मैं खुश हूं कि एक आजाद देश की हवा में सांस ले रहा हूं, लेकिन आबाद नहीं हुआ, प्रॉस्पर नहीं हुआ, जो जिसका सपना हमने देखा था कि ये देश सभी लोगों का देश होगा। तो अपना वो पुट वहां पे उस बस्ती के गाने में लेके आते हैं वो। और वहीं शाहिर प्यासा में लिखते हैं जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। दिस वाज अ नोन डॉक्यूमेंटेड कमेंट ऑन नेहरू गवर्नमेंट कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। दिस इज नॉट अ फिल्म सॉन्ग, दिस वाज अ कमेंट ऑन नेहरूज गवर्नमेंट। तो जो लिरिसिस्ट है वो अपनी जगह ढूंढ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अब आई थिंक टाइम का कंस्ट्रेंट है, कुछ और फंक्शंस हैं, बसेस जाने वाली हैं, तो एंड करते हैं राज से रिक्वेस्ट करके कि या तो जो पवन जी ने बोला है जो मलयालम का वो, या फिर एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है क्योंकि ये और लोगों से भी आए हैं, ऐसे क्यों दोनों सुना दीजिए। ऐसे ऐसे क्यों सुना देते, वो याद है तो। ये गाना सर, कभी गाना मतलब ये गाना मैंने बिल्कुल एक एक रोमांटिक उसके लिए लिखा था, पर धीरे धीरे ये गाना मुझे पता चलने लगा कि मेंटल हेल्थ के जितने पेजेस हैं ना, उन्होंने इस गाने की बहुत सारी लाइनों को अपना लिया। और आप कभी ये चीज नहीं, ये जो सर आप कह रहे थे, पूछ रहे थे सवाल, आप मैं कभी नहीं सोच सकता कि ये लाइन अच्छा एक एंजाइटी से गुजर रही लड़की या एक किसी परेशान लड़के की जिंदगी में इस तरीके से फिट बैठ सकती है। अ, ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर, ऐसे क्यों बातें खुद की ही खुद से छुपाती हूँ मैं आजकल, पर ये सब सोचना, दिल को यूं खोलना, सब कुछ कह के ही सबको बताना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों उसके होठों पर अच्छा लगता है मेरा नाम, ऐसे क्यों कुछ भी बोले वो मन में घुलता है जाफरान, गिरता है गुलमोहर ख्वाबों में रात भर, ऐसे ख्वाबों से बाहर निकलना जरूरी है क्या? वाह। अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, फिर क्यों दिल ही दिल में कोई डर सा लगता है? बीता जो वाकया सोचूं मैं क्यों भला, बीती बातों से दिल को दुखाना जरूरी है क्या? थैंक यू मैं वेरी मच। राजशेखर की एक बात बता दूं, जी। अभी इनका एक गीत आ रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बट एक रोमांटिक कपल के बारे में है जो एक कमरे में बैठे हैं और दोनों के हाथ में अपने अपने मोबाइल फोन है। अरे वाह। अब सोच लीजिए कैसे लिरिसिस्ट अपनी बात कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में और कुछ नहीं, लेकिन इतना इंतजार रहेगा, बहुत इंतजार रहेगा, और आपका इंतजार रहेगा अगले लिट फेस्ट में या उससे भी पहले। जी जी बिल्कुल। शूलिनी आपका घर है, हम आपका हमने आपको शामिल कर लिया है शूलिनी परिवार में। डॉक्टर खोसला, मिसेस खोसला यहाँ बैठे हैं, वो भी सिर हिलाकर हामी भर रहे हैं। तो प्लीज आइए, जल्दी आइए, और बहुत बहुत शुक्रिया
आप दोनों का इस लास्ट सेशन के लिए जो लिट फेस्ट का शेड्यूल है उसमें। तो इस मौके पर आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबडी। आई विल टेक टाइम टू thank each one individually for all their contributions. My team here, my team there. I am so grateful for their efforts, which has brought such a wonderful literature festival to Shoolini. But अब वक्त है कि एक फेलिसिटेशन हो जाए राज और पवन का, और उसके बाद चाय का इंतजाम है फैकल्टी क्लब में। चाय का एक कप पी के जाइएगा जरूर जी। नहीं ठीक है, ले जाते हैं वापस। नहीं नहीं नहीं, हाँ यस, आपको 2 मिलेंगे। तो जोरदार तालियां एंड थैंक यू सो मच। डॉक्टर खोसला, मैम खोसला प्लीज। पिछली बार एक जो मसाला दिया था ना आपने, वो हल्दी वगैरह का कुछ, वो बहुत अच्छा था। हाँ, Thank you so much for all the love. So one more announcement, ब्रह्मानंद जी यहाँ पर हैं। कल सुबह 10:30 बजे इसी हॉल में जगजीत सिंह पर एक इन्होंने फिल्म बनाई है जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, कागज की कश्ती। उसकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद इनके साथ बातचीत होगी। तो 10:30 बजे तो जरूर आइएगा। और और बाकी लाइक आई सेड, फैकल्टी क्लब में हैव अ कप ऑफ टी विद अस एंड देन बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अरे वाह, क्या बात है। सो like I said, let's meet, and I think some of you will also be going down for Moksh. We have Shahid Malia coming in today, so we'll have a fun evening. Thank you so much, and good evening. Thank you. Bye.